Hello, hello. How is everyone doing? So I was basically trading from the midnight open range. I am targeting $4,000 on this account for today to pass this evaluation. It's a 50K bold account where I lost $1,000 yesterday. Daily loss limit है. So yep, काफी टाइम बाद मैं आज लाइव आया. Because हमारा इंटरनेट नहीं से चल रहा था प्रॉपर्ली. I hope so. Everything is fine now. So, yeah. How is everyone doing? Let me check the audio and everything else as well. Bear with me. So I want this fair value gap to be pushing prices higher. So yeah, yes, everything. Yeah, seems to be working fine. So how is everyone doing? क्या बात है भाई? अफरा भाई आए हैं आज. क्या हाल है अफरा भाई? How is everything? Happy New Year. आपके कनाडा से एक दो लोग हैं यहाँ पे. और ले आओ तो मजा ही आ जाएगा भाई. क्या बोल. ब्रो प्लीज टीच मी हाउ टू ट्रेड. क्या बात है भाई, क्या बात है. आओ तो आप आओ थोड़ा सा डिस्कॉर्ड पे वो बिजी करो चीजें, सवाल पूछो. सबसे पहले तो लाइक कर दो अफरा भाई. 10 3. तो इंट्रोडक्शन के लिए अफरा भाई, ये ईएस है, ये एनक्यू है, 1 मिनट टाइम फ्रेम है. ये एमएनक्यू है, ये एनक्यू का ही छोटा कॉन्ट्रैक्ट होता है स्मॉलर साइजिंग के लिए.
तो अभी हम लॉन्ग हैं। मैंने यहाँ से 3 कॉन्ट्रैक्ट खोले थे, एक पहले यहाँ पे उतारा, फिर एक और यहाँ पे खरीदा, फिर एक यहाँ पे उतारा। तो आज 8:30 बजे पीपीआई है, सीपीआई, आई थिंक सीपीआई है। हाँ, तो ईएस जो होती है वो S&P 500 के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, और ये एनक्यू जो है, ये नेस्डैक जो है वो एनक्यू के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। ईएस यूएस की 500 बड़ी कंपनीज की इंडेक्स है। एनक्यू जो है वो यूएस की 100 बड़ी टेक्नोलॉजी की इंडेक्स है। तो कोई सी भी मार्केट आप खेल सकते हो, आप गोल्ड पे भी वो ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स पे भी कर सकते हो, लेकिन आजकल मैं बोलूँगा कि ये सबसे अच्छी मार्केट है, बिकॉज पूरी दुनिया के पास एक ही प्राइस होती है एट वन टाइम इन दिस मार्केट। सबसे पहली चीज़ तो ये तो, एज अ स्टूडेंट आपको प्रिसिशन वगैरह स्टडी करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। दूसरा, जो चीज़ें चल रही हैं इकोनॉमी में, उसके बेसिस पे फॉरेक्स में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए आजकल, क्योंकि मेजर चेंजेस उधर आ रहे हैं। कैश माइट गो आउट ऑफ द बिजनेस और ऐसी चीज़ें, तो जस्ट स्टे आउट एंड लेट देम कॉज द डिस्टरबेंस फर्स्ट, और फिर ये सब तो होता ही रहेगा। क्या समझे आप थोड़ा भाई, कोई सवाल वगैरह पूछे तो मैं बताऊं तुम्हें। आज कोशिश करूंगा कि लंबी स्ट्रीम करूं अंटिल न्यूज़ ड्राइवर, बीच में शायद 1 घंटे के लिए पॉज लें हम, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी द रूटीन। 3 a.m. ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम टुडे आई गॉट a little early, लेकिन यूजुअली आई विल बी ऑनलाइन बाय 3 a.m. ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम until the 9 a.m. or 8:30। भाई उठा लिया वो, खैर सिर्फ ये चीजें नहीं, लेकिन वो बहुत सारी चीजें कर रहा है, लेकिन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि कोई भी सुपर पावर जो है वो अपनी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ जो है वो खो देगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी अ रीसेट। तो दिस हैज हैपेंड बिफोर एज वेल। पहले भी ऐसे होता था कि आई थिंक फ्रेंच वाज used as a global reserve currency, but later on, when they lost their power, that was no more the case. So I think Trump is a fall guy. He is going nuts because of that case. They are just using him to make changes which cannot be done by any other person in the US politics, I believe. लेकिन बिल्कुल ही पागल हो गया भाई, बिल्कुल ही पागल हो गया। हाँ, ऑयल का ही चक्कर है, ऑयल और रिसोर्सेज का चक्कर है। आपके पाकिस्तान से भी तो उन्होंने वो की है अभी डील, जेम स्टोन्स की।
तो भाई यही है, आप कुछ दुनिया को दोगे तो दुनिया आपको देगी। अगर आपके पास कुछ नहीं है देने को, तो फिर बस आप बैठे रहोगे हाथों पे हाथ डाल के। So I am up $2,400 on this account. I'm targeting 4,000 on this account to pass the evaluation. ये चक्कर है। आपका क्या चल रहा है अपना भाई? हाउ इज लाइफ? न्यू ईयर को तो आपने फुल पार्टी की होगी। यार मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ एनक्यू पे, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स होती हैं ये यूजुअली अलाउ नहीं करती हैं आपको ओवरनाइट ट्रेड्स होल्ड करने के लिए। लेकिन आप एनालाइज कर सकते हो लॉन्गर टर्म पे भी। तो अगर तुम्हें कोई मार्केट यू वांट कि अगर तुम कोई देख रहे हो मार्केट और चाहते हो कि मैं कुछ बताऊं इस पे, तो लेट मी नो। लॉन्गर टर्म एनालिसिस। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये 1:30 बजे के बाद जो बनता है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड 1:30 टू 2 AM बनती है आपकी ओपनिंग रेंज फॉर द लंदन सेशन, which is used during the London session very effectively. नहीं, मैंने कोई खास पार्टी तो नहीं देखी, लेकिन यही सीन है। गुड है, अच्छा है, एंजॉय करो। हम तो यहीं पे बैठे हुए स्ट्रीमिंग कर रहे थे न्यू ईयर पे, और वो भी अकेले, एक दो लोग थे शायद। आई थिंक दैट वाज द लॉन्गेस्ट स्ट्रीम आई हैव हैड अप टिल नाउ, 5 या 6 घंटे की। तुम्हारी यूनी वगैरह या आगे पीछे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, तो उन्हें भी लेकर आओ। हाँ यार, कंसिस्टेंसी का ही मसला हो रहा है। जब मैंने ये न्यू ईयर से पहले शुरू किया था, तो फिर उसमें मसला क्या हुआ कि मेरा इंटरनेट ही बंद हो गया। लाइक आई डिड नॉट हैव 5G, और 4G इतना स्लो चल रहा था कि उस पर मैं ऑब्वियसली स्ट्रीम और फिर इतने सारे चार्ट्स लेके नहीं चल सकता। बहुत रिस्की होता है, ग्लिच करती हैं चीज़ें। तो हाँ, बहुत मसला हो रहा है। और फिर ये होता है कि मैं अपनी जॉब 5 बजे ख़त्म करता हूँ और 5:15 बजे आके बैठना होता है मुझे यहाँ पे डायरेक्टली। तो रूटीन में भी मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है। लेट्स सी। हाँ, ये है। और फिर दूसरा मसला ये है कि मैं अपना फेस नहीं डाला हुआ। और दूसरा ये कि मैं टाइम ही नहीं होता कि शॉर्ट्स बनाऊं या वीडियोस बनाऊं। वो सारी चीज़ें बाद में करूंगा वंस आई हैव टेकन दिस फुल टाइम। लेकिन अभी के लिए स्ट्रीमिंग और अपना एक रिकॉर्ड, क्योंकि दूसरा मसला मेरे साथ जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जब भी मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा तो आई एम नॉट फॉलोइंग माई रूल्स। मैं बिल्कुल रेकलेसली ट्रेड कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स आर सपोज टू बी। तो इस एक और मेजर रीज़न जो स्ट्रीम करने का है वो ये भी है कि भैया जी रूल फॉलो करो अपने। बिकॉज अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो फिर ये चीज़ें काम नहीं आती। आज की लेटेंसी काफ़ी अच्छी है। लाइक आई जस्ट टेस्टेड, देयर इज नो डिले।
हाँ देखो, अगर तुम्हारे पास 11 बज रहे हैं रात के, और अगर तुम 11 बजे से 3 घंटे और निकाल सकते हो 2 बजे तक अपने रूटीन में, तो तुम लंदन सेशन खेल सकते हो, क्योंकि जो ईएसटी है ना, 2 बजे से 5 बजे का सेशन होता है लंदन सेशन। तो अपना एक विंडो बना लो 3 घंटे का, जिसमें तुम मार्केट देख सकते हो, और फिर मेरे पास आ जाओ एंड आई विल टीच यू एवरीथिंग अबाउट दैट। बाकी मेरे सर्कल में लोगों का नहीं इंटरेस्टेड है, मसला नहीं है। हो जाएगा जब तुम करना शुरू करोगे। ट्रस्ट मी। तो इधर से हमको और चाहिए कोई 1200। ये भी बड़ा मसला है यार, मुझे हमेशा अपना पीएनएल भी खोल के रखना होता है, वरना वो उसको दिखता नहीं है। कितने से करना है भाई, पैसे तो नहीं लगाने। तो पहले आप आओगे मेरे पास, मैं आपको चीज़ें थोड़ी नहीं चीज़ें बताऊंगा, और वो चीज़ें आप देखोगे, चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। पैसे भूल जाओ अभी, मतलब स्टार्ट में। और ट्रस्ट मी, मतलब इतना ये लुक्रेटिव चीज़ है कि पैसे की टेंशन नहीं होनी चाहिए। और अब तो प्रॉप फर्म्स हैं, तो अपने पैसे से बंदा खेले भी नहीं, बस ये चीज़ सीखे, प्रॉप फर्म के चैलेंजेस उठाए 100 150 डॉलर के, उसमें तुम्हें ये सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उधर से पैसे बनाओ अपना पर्सनल अकाउंट के लिए, और फिर अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट करो। लेकिन शुरू में तुम्हें कोई भी पैसा नहीं चाहिए, बस टाइम चाहिए बहुत सारा। तो अगर तुम वो दे सकते हो तो बेस्ट है। वी आर इन मैक्रो नाउ, 150 to 210 मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो 20 मिनट का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, हर घंटे के एंड के 10 मिनट और हर घंटे के शुरू के 10 मिनट, उसमें जो है मार्केट यूजुअली एक्सपेंड करती है, या मेन रन जो है वो उन 20 मिनट में होता है। और अभी लंदन सेशन भी खुलेगा इन 6 मिनट्स। सो या, कब करें स्टार्ट फिर ब्रो? जब तुम बोलो। मतलब मैंने डिस्कॉर्ड पे चीज़ें डाली हुई हैं कि मैं क्या चीज़ें देखता हूँ ना, तो मैं तुम्हें अभी दिखा भी देता हूँ। एक मिनट तो मुझे। लेकिन क्या होता है कि लोग ये चीज़ें लिखते नहीं हैं, और लिखे बगैर और इसको रिव्यू करे बगैर और अपने चार्ट्स में देखे बगैर ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, और टाइम देना होता है ना, मतलब अपनी खुद चार्ट्स में भी जाके देखना होता है। तो मैं मार्केट कैसे पढ़ता हूँ कि मैं, मेरे पास ये सारे एनोटेशंस होती हैं, प्राइस लेवल्स होती हैं, ये सारी जो देख रहे हो ना, कि न्यू डे ओपनिंग गैप, ये सारी चीज़ें। तो इसमें मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ कि मेरे पास क्या क्या होता है, बल्कि मैंने डिस्कॉर्ड पे डाला हुआ है। तो 5 न्यू डे ओपनिंग गैप्स होते हैं, 5 न्यू वीक ओपनिंग गैप्स होते हैं, कल का हाई, कल का लो, परसों का हाई, परसों का लो, उससे पहले दिन का हाई, लाइक लास्ट 3 डेज हाई, लास्ट 3 डेज लो, लास्ट वीक्स हाई, लास्ट वीक्स लो। तो ये कुछ की लेवल्स हैं, फिर रेगुलर ट्रेडिंग आर क्लोजिंग प्राइस। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, इनके पीछे साइंस है, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। लेकिन डिस्कॉर्ड के स्टडी उस पे टैब में ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, तो उधर जाओ, उसमें से कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझे बताना। उधर मैं और क्या डालूंगा कि हर चीज़ क्या है वो भी मैं डालता हूँ, जैसे न्यू डे ओपनिंग गैप क्या होता है, अगर हम ये वाला देखें, तो फ्यूचर्स की जो मार्केट है ना, वो न्यूयॉर्क के 5 बजे बंद होती है, 4:59 पे, 4:59 पे बंद होती है 1 घंटे के लिए, और फिर 6 बजे खुलती है। तो ये जो होता है, मतलब
यहाँ पे बंद हुई थी 5 बजे और 6 बजे यहाँ पे खुली 1 घंटे के बाद, तो ये गैप है। और क्योंकि ये मंडे है, लाइक ट्यूसडे का गैप है, तो दिस इज वाई दिस इज न्यू डे ओपनिंग गैप। न्यू वीक ओपनिंग गैप क्या होता है कि जैसे ये है, ये कल इधर ये फ्राइडे को मार्केट बंद हुई थी यहाँ पे, और फिर मंडे को मार्केट यहाँ पे खुली, तो ये जो है ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है। तो ये पिछले 5 हफ्तों के और पिछले 5 दिनों के मैं अपने चार्ट्स पे रखता हूँ। फिर मिडनाइट ओपन प्राइस क्या होती है कि लंदन में जब मिडनाइट होता है 12 बजते हैं, तो ये वाली प्राइस दिस इज मिडनाइट ओपन प्राइस। फिर 12 बजे से 12:30 की मिडनाइट ओपन रेंज है, ये चीज़ स्ट्रांग होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन इसके थ्रू होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कि तुमने डेली कैंडल देखी है, डेली कैंडल ये है, और तुम बुलिश हो, फॉर एग्जांपल ये इस पे देखते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि दिन यहाँ पे खुले और वो सीधा ऊपर चले जाए, ऐसा बहुत ही रेयरली कभी होता है। वो पहले आपको ट्रैप करेगा कि हम जो है वो नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना, और फिर वो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे ऊपर लेके जाएगा। तो अभी तुम देखो तो इसने एशियन सेशन में ये पूरा ब्लू जो डब्बा है, ये एशियन सेशन है, इसने इसने ड्रॉप किया नीचे, ठीक है ना। अब और ये इसकी रिट्रेसमेंट है, अभी लंदन ये खुलने वाला है 3 मिनट में, तो कौन से सेशन में मार्केट क्या कर रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो चीज़ें रिपीट होती हैं कि अगर लंदन ने कोई स्पेसिफिक चीज़ की है तो लंदन के बाद ओवरनाइट सेशन होता है, तो वो एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ करेगा। उसने कुछ किया है तो फिर जब ओपनिंग होती है, मार्केट ओपन 9:30 बजे, वो बहुत स्पेसिफिक चीज़ करती है। अगर उसने फॉर एग्जांपल वन साइडेड रन किया है तो लंच जो है वो सिंपली उसके अंदर रिट्रेस करेगा। तो इस तरीके से मैं मार्केट पढ़ता हूँ कि टाइम सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, जो कि हमेशा न्यूयॉर्क टाइम जोन पे होगा। और दूसरा जो चीज़ें हैं वो ये की लेवल्स होगा। तो कुछ समझ में आया? 2 minutes away from London. अब ये आ सकता है कि इसको मिडनाइट ओपन रेंज की सेल साइड लेनी हो शायद। तो सेल साइड क्या होती है, जिसके नीचे नीचे वाला वो बाय साइड होती है, ऊपर की तरफ वाले स्टॉप लॉसेस। तो अगर ये अभी ड्रॉप करता है तो हम देखें क्या ये एशियन रेंज लेता है या नहीं लेता है। अच्छा, दूसरा मैं हमेशा एग्जीक्यूट करता हूँ एनक्यू पे, लेकिन मैं ईएस भी देखता हूँ, क्योंकि ये दो मार्केट्स जो हैं ये हाईली कोरिलेटेड मार्केट्स हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कल हुआ था, कि कल ईएस ने लंदन सेशन में उससे पिछले दिन का लो लिया, लेकिन एनक्यू ने नहीं लिया। उसने उसका लो यहाँ पे था, उसने नहीं लिया। तो ये ऐसे बुलिश एसएमटी डाइवर्जेंस होती है कि अगर ये हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि अब चीज़ें बहुत बुलिश हैं और स्मार्ट मनी रिवर्सल होने वाला है। और देखा कि उसके बाद पूरा जो दिन है उसने कभी भी वो उस तरफ आया ही नहीं, इस लो की तरफ। पूरा दिन जो है वो कहाँ गया, मतलब 639, और फिर कोई 500 पॉइंट, 500 पॉइंट जो है, ये अगर एनक्यू का आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट खेल लो तो दैट इज $10,000। यार अपने टाइम के लिहाज से देख लो, सबसे ज़्यादा जो वॉलेटिलिटी होती है वो ऑब्वियसली न्यूयॉर्क सेशन में होती है, जो न्यूयॉर्क के 9:30 बजे खुलता है, ठीक है। और लंदन सेशन में भी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी होती है डे ट्रेडर्स के लिए। तो अगर ये सेशन मेनली है कि तुम्हारे स्केड्यूल में क्या टाइम बैठ सकता है कि तुम आके कंसिस्टेंटली देख सको मार्केट। क्योंकि एक्सपीरियंस बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम देखोगे नहीं मार्केट्स, बैक टेस्ट नहीं करोगे चीज़ें, तो तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी।
अब देखो ये एक और कॉन्सेप्ट में तुम्हें समझाता हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप होता है कि ये कैंडल वन है, ये वाली, ये कैंडल थ्री है, ये कैंडल टू है। तो देख लो कैंडल वन और कैंडल थ्री में एक डिफरेंस है। ये डब्बा जो मैंने बनाया, ये इस डब्बे को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो जब भी ऐसी इनएफिशिएंसी होती है ना, तो मार्केट हमेशा इस तरफ आती है। अब क्या पता वो अभी नहीं आए, ठीक है ना। और आके इसका जो मेन बायस है वो यही है कि भाई इधर से आके वो बुलिशली कंटिन्यू करे। लेकिन क्या करती है, कभी कभी ये आएगी यहाँ पे और इसको ना के बुलिशली यूज करे, इसको बेरिशली यूज करेगी। तो अभी जो ये आ रही है नीचे मार्केट, ये ऐसी ही या तो इनएफिशिएंसीज बढ़ने आ रही है। अब देखा जैसे हम मैं 15 मिनट पे आया तो 15 मिनट में ये छोटा सा डब्बा था जो उसने भरा और फिर बुलिशली एक्ट किया। तो क्या पता वो यहीं से निकल जाए, और क्या पता वो आर्ली में भी आ जाए, क्या पता वो उससे भी नीचे आ जाए। तो इस तरीके से मार्केट पड़ता है। मतलब मैं, और शुरू में लगता है कि मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और ये सब, लेकिन जैसे जैसे आप वो बनाने लगते हो अपना एक्सपीरियंस और टाइम लगाते हो, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि मैथ की तरह है, इफ देन वाली सिचुएशंस होती हैं। तो वो देख लो, लंदन सेशन देखो कि लंदन सेशन, लंदन टाइम जोन देखो, और उसमें बताओ मुझे कि कौन सा सेशन जो है वो तुम खेल सकते हो। और देखो वही फेयर वैल्यू गैप फिर 1 मिनट पे भी होते हैं, जैसे मैंने इधर एक बनाया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ये है जिसकी मेन प्रोफाइल क्या होनी चाहिए कि इस पे प्राइस आए और नीचे जाए। लेकिन हम क्योंकि बुलिश हैं बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, हम मैं जो एक्सपेक्ट करूंगा वो इसको ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो इनिशियली इसको बुलिशली यूज करे, कि मतलब इसके अंदर आए और इसको एज अ, जैसे पहाड़ पे चढ़ने के लिए पत्थर नहीं यूज करते, उसको पकड़ के ऊपर चढ़े। हाँ ऑन है, यहाँ पे ही डिस्कस कर लो तो ज्यादा बेहतर है। या डिस्कॉर्ड वगैरह पे। तो क्योंकि होता क्या है कि दूसरे भी आपके सवालों से सीखते हैं ना। देखा ये इसमें आ गई, इस फेवरली गैप में। तो ये इसका ये वाला है। वैसे अगर पूरी इनएफिशिएंसी पढ़ोगे तो ये है। और जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है ना चीज़ों का, वो होता है इसका मिड पॉइंट। अब देखो अब ये नीचे जा रही है, लेकिन देखो कि 1 मिनट में यहाँ पे भी इनएफिशिएंसी है। और यहाँ पे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है कि ये कैंडल जो है ना, ये इस मिनट में यहाँ पे बंद हुई थी, लेकिन अगली कैंडल जो खुली है वो यहाँ पे खुली है। तो ये जो है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, क्योंकि ओपन में ये गैप है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जहाँ पे प्राइस आती है, थोड़ा सा रिएक्शन दिखाती है और आपको हेल्प कर सकती है टू स्टडी कि मार्केट क्या करना चाह रही है उस टाइम पे। और सब्र बड़ा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़।
क्योंकि आप मार्केट को हिला नहीं सकते, आप बस ट्रेड ले सकते हो और अपना स्टॉप लॉस पर डिटरमाइन कर सकते हो। दैट इज इट। ऑन टेक केयर ब्रो। स्लीप वेल। So high impact news driver today 8:30 for CPI, and then medium impact news driver at 10 o'clock, new home sales. Both the indexes are taking a slap at the moment. I'm just going to stay patient with my position here. Yesterday wasn't a really nice day for me. Went really reckless. Blew my 350K evaluations with Tradify, and also breached the daily loss limit on this one, funded next bold challenge. And this is what has been happening with me whenever I'm not streaming. I am unable to follow my rules, trading recklessly, over trading, over leveraging, and all. That's why I need to build the consistency of being here. I actually closed my London session with a profit of $300 on all the four accounts. But then I was just talking to my family over the phone call and randomly added a short position where I just explained the SMT divergence earlier. I entered a short position literally here where I was supposed to enter along because मैंने बंद ही शॉर्ट इस वजह से किया था कि मुझे ये लग रहा था कि ये yesterday के लिए नहीं जा रहा और उसने ले लिया है ES ने, तो this will should be bullish SMT divergence. और पता नहीं मुझे क्या हुआ, like I kept on shorting it, going reckless, although it was such a smooth move to London high and then to the rest of the targets as well, but couldn't manage my positions and my emotions yesterday.
For today's position, I entered three long here, took one off there, entered one more here, took one off there. If it gives me any proper discount around this level and shows me strength, I might add another one and might add 7 micros there as well. Because we've got this 1 hour VC, this is what I am looking at. If they want to trade inside it before moving higher or no. I'd like to add somewhere here in this 5 minute. I could push there. Looks like they're going to continue to run high. So on NQ, we are currently trading inside the daily see CB, sorry, not really. Okay, got this. So if you see, we are trading inside that, and that is what has been annotated here. So we are currently trading above the lower quadrant of that. That is the consequent encroachment. But I am okay. I would like to take everything off here actually. I'll put one for the new day opening gap for today and one for this consequent encroachment there.
holding it well. We tested the new week opening gap low there from this week. This is what I'm talking about. And ES is a new day opening gap for today as well. Will they be pushing the prices lower from here? Let's see. Can be expecting London to drop initially. We've also got 1 hour BC here. So I'd like to add something there.
balance liquidity voided. But there's no trading. Not allowing. Very good recovery there. Would love to provide it some discount for us to add there though. What do you guys do when you guys are just waiting on your trading setups to play out? Alright, good push higher there. Let's check what the 1 minute is doing. Back and there is inefficiency.
Seems like it is holding it to run further higher, especially ES. Hmm. Well, looks interesting though. Mhm. 230.
I'm expecting it to make lower low and provide some discount in this 5 minute and hourly BCs, and maybe then continue higher. Yeah, that 5 minute is in the discount of that hourly BC. So would love to see a drop lower initially and that hold it around 250-ish, 250 to 310, and then continue higher. But it can easily continue dropping lower as well, as we just discussed that ES is currently trading inside the new day opening gap, while NQ has retested the new week opening gap of this week, low of it. Although it can continue higher, make a higher trade around this regular trading hour closing price. That is what my trade is all about. But we need to be prepared for it to be done with this retracement and continue the move lower towards these lows, because I don't think that the sell side damage has been done yet. So we have also got the high impact news driver at 8:30, and maybe then is when they might target these lows, um, and uh, offer London a buy side delivery as a manipulation. So, yeah, that is how I'm reading the market right now. Let me know if you guys are trading NASDAQ and as well. What do you guys think we will be getting from here? And maybe your plans and other things as well. It's really good to know new traders. I am here every London session, so you can subscribe to the channel or join our free Discord as well. It's mainly focused around the ICT learning and being better every day.
And ES is taking a hit again. So is NQ. 10 minutes away from 250 macro. Good recovery there. ES might be referring this volume imbalance there. Got nothing like that on NQ though. This is how the 50-minute is looking. Alright, I'll stay with that. So I'm just reading the work. Here it says there is an overused story about three birds sitting on a fence. The question is, if two birds decide to fly away, how many birds are left? The answer is three birds are left. The lesson is, just because you decide to do something does not mean you will do what you decide to do. In the real world, less than 5% of the US population is rich because 95% of the population may want to be rich, but only 5% take any action. Ah man, this hit so hard because I was screaming since 2022 that go long on BTC, go long on silver, go long on gold, and cash out around 2025 end. And
because of the personal circumstances, and there were so many things happening. I could not really cash out on that opportunity, but this was really a start of my journey in this financial industry. So I think it was really good. Learned some really good lessons, but only if I start, applying the lessons that I've learned and stop doing the same mistakes. Good push higher there. We are 3 minutes away from 250 macro. So initially expecting it to be doing the run higher in London session, trade around the new day opening gap from today, maybe fill in this inefficiency, trade inside this 15 minute and make a high for the day. So yeah, got similar thing on ES as well. And maybe after that we can see continuation lower because I don't think that the sell side damage has been done yet. But we have got high impact news driver today, CPI at 8:30. So maybe that is when they might target those lows.
All right, we are inside macro now. 10 minutes away from 3 o'clock. Man, this Robert Kiyosaki guy is so good. If you have never read any of his books, do give it a try. I would say start with Rich Dad Poor Dad and really change your mindset.
So just going to be really patient here and let market do its thing. We are still in macro. Did see a little exposure towards the side that we wanted to see, although I am still a little hesitant to see it run directly from there. I think it should have provided some discount, but maybe because they mainly want to run it lower after hitting those levels and filling in that inefficiency. Maybe that is what is going to happen. Either ways, I'm just going to stay patient. If it gives us any discount and shows us any support here, that it is continuing higher, I might add on board because I am targeting $4,000 for today on this account to pass this evaluation with funded next. So that is the plan. Let's see. Going to stay really patient. Yesterday, I traded really recklessly and ended up blowing my accounts. So not going to repeat those mistakes, and that is what is going to like keep on happening with me whenever I'm not streaming these days. I cannot stick to my rules and manage myself. So yeah. So looks like it is going to be giving us some discount. We are 2 minutes away from 3 o'clock. Got these inefficiencies, and we are currently finding some support at the lower quadrant of the daily CB on NQ. And yeah, I'm expecting it to trade higher, read as the new day open gap from today during London session. And then we have also got the high impact news driver at 8:30 a.m. as CPI. So that is when I am expecting it to do some sell side damage, taking Asian lows there on both ES and NQ, because I think we have still got a lot of sell side to be taken here. So either they are going to do it during London and then continue it running higher using the impact news driver. Let's see. Just going to be patient and stick with this trade, expecting it to provide some discount and hold it here so that we can add. All right, 3 o'clock opens and gets slapped. To reduce risk there.
So, how are you guys looking at the market? If you guys trade NASDAQ or use ICT Concepts, let me know. It's always good to know new traders. All right, our bodies are respecting the lower quadrant of daily CB there on NQ. Continues trading lower from there. And I do trade London session here every day, live streaming over YouTube, Twitter, and Kick. So you guys can subscribe the channel or and also join my Discord server. It's a free server, mainly focused on ICT learning. And if there are any Urdu or Hindi speakers, let me know about that as well. I'm trying to know my audience so that I know when to speak in Urdu and when to speak in English. So, Ramani Bhaiyo, let me know about you, what you guys are planning for 2026. So my goal is to, I've already got around 70K Australian dollars in payout for this financial year. So talking from July moving on, I am targeting to get it around 250K in revenue and not increase my expenses because my expenses are already around 63,000 if I'm not wrong. So not increasing them by more than 100K in prop firm expenses, and then I need to incorporate the company and do other expenses as well. So those are my goals, and once those things are achieved, I can fund my own personal account as well, hopefully, at Futures to continue trading NQ with my own money rather than using prop firm accounts. I will be using the prop firm accounts, but will secure my own personal account so that we do not have to worry about those payout rules and all that. Because prop firms are the best opportunity these days, I would say, for anyone starting to trade and do not have capital. Um, Once you know what you are doing, you can easily scale this up. All right, seeing some push higher. We have also got new hourly candle opens here. So looks like it wants to run the highs initially as we were expecting it to do.
All right, just going to continue practicing patience here, and let's see if they are going to provide us any discount and hold in this area. We might add. If not, then it is what it is. Also, let me know which sessions do you guys trade, because I'm a bit confused on whether to be live streaming the morning session starting from 8:30 as well. Because what my schedule looks like is I get back from my 9 to 5 and start streaming my London session at 3 a.m. Eastern Standard Time. Usually, today I was a bit early, and then continue until 5 o'clock Eastern Standard Time. And then I was thinking of also doing another morning session stream starting at 8:30 on the days where we have got high impact news driver, and when we do not have any high impact news driver at 8:30, then I can start at 9:30 a.m. Eastern Standard Time. But what the issue is, like, that is around midnight here in Australia, and if I really need to follow my 9 to 5 and all of this, it gets really hectic for me. So yeah, and then I also do not have any team to manage my social media presence or anything like that. Would really love to know someone like a video editor, especially. So let me know in the comment section if you guys wanna get hooked with this project of mine. We've also got this 1 hour inefficiency, remember, that we can see the price trade inside of. And this 5 minute is actually in the discount section, like the lower half of this hourly. I'll show you. That's what I'm talking about. So up till now, a pretty shitty London session. No expansion on either of the side. It's just consolidating sideways. Too many wicks as well. And it has been like this, especially NQ, since the start of New Year. And that is why it is recommended to stay offside most of the January, so that it can provide you with the information, because having more data is the best thing you can do for your trading. And that is why I do not like to trade in Asian session. What happened with my funded account this week? I think it was this week, yeah. Like, I passed last week one of the funded account with Tradify. I ended up blowing it, literally trading over my phone while I was at work. So to avoid those kind of things, I am mainly focused on building up this community, because there is no accountability factor for me. And because of that, I end up doing things like that. All right, ES is making lower low for the London session there, and NQ seems to be following as well.
Let's see if they want to hold inside these inefficiency. I want to check how ES looks on hourly. Got no significant busy, to be honest. So this 5 minute should be our hope. Maybe it can be coming for the low of the midnight open range as well, because in order for it to be a bullish day, they need to upset people who have went long from there. It is not usually the case, but like it is usually the case, but not all the time. And reading price action with these sessions and time in mind is really important because it repeats. And if you have gained significant experience, like I have been trading only NQ for the last, I think, 1.5 year and using only ICT's concept, just stick to one strategy and one market and one session, and I'm pretty sure you will develop a great sense of understanding about the marketplace and how it books price. I'd like to add three here at the top of Asian session there, and we'll wait to add anything on this one because this is obviously a mini contract. I really want to learn about options trading as well, but that is something for later on, maybe not this year. Stick to all right. ES trades through. Looks like it is going to sweep the low of midnight open range. Might also run this low and trade inside this inefficiency. Use that breaker to continue the run higher. 4 hours looks like it should be expanding lower. Still risking 400 here. I have booked around 1100 in those first two partials and partials on this micros as well. I'm also trading on funded next competition just for fun. So उधर CFDs पे ट्रेड होती है mainly, not mainly, like only CFDs पे ही ट्रेड होती है. तो I am long on silver. मैंने एक पार्शल भी लिया है वहाँ पे 2000 का. So let's see how that position is looking like. Oh, वहाँ पे तो पूरा TP hit हो गया. That's nice. So I started this account yesterday.
funded next. Up 13,000, was up 23,000 actually. Yeah. Yesterday, but ended up taking some really stupid shit on platinum and things like that just to try the lot sizes, and I understand that ended up losing almost everything of that and then just made around 13,000, I believe. So, yep. Okay, NQ is trading inside this SIBI now. Looks like it will be continuing lower from there at least. If you're liking this stream and learning anything, if you guys can drop a like, it will be really helpful because we are really new community here. And I trade every day, at least the London session. So if you guys wanna see me trade NASDAQ, I use ICT Concepts in real time. You guys can subscribe the channel. Also, you guys can join free Discord. It is mainly focused around ICT learning and being better every day. It's not a trade signal group or anything like that, so please do not join with those sort of expectancies. So currently we saw a little bounce around the 1 o'clock open price, and it looks like it wants to run lower from this 1 minute SIBI. We tested the daily SIBI's lower quadrant there on NQ. We are still not filled there on our entry. ES is looking strong from here. Did not take the sell side on midnight open range that we expected it to do. Right, closing strongly there. 5 minute. Retesting the lower quadrant of daily SIBI. This is what I'm talking about. The daily chart. And then I have marked the premium bits quadrant on ES that you can see here. That's the start of the wick from yesterday. So I'm expecting it to trade around consequent encroachment at least, maybe, or at least to the lower quadrant there. These daily levels are highly precise, and you can use these levels to scalp really effectively throughout the day, I would say. And the reason that we found such strong support during the midnight open range from the start and the low of this daily SIBI, we have consolidated around the lower quadrant, took this the sell side of the consolidation,
Now we seem to be inverting it, although I can expect it to provide a small discount and find some support here maybe, or at least in the early busy. But let's see. So 3:22, we are 8 minutes away from 3:30, which is one of the major times in all the markets if you trade CFDs, futures, or anything, to be honest. Time is really important, guys, and always have it on New York time zone because that is how the market actually clear the orders and books the price. We are trading above the Asian session highs, but expecting it to trade inside this inefficiency on 5 minute on NQ and retesting the new day opening gaps from today. I'm targeting 4,000 on this evaluation account from Funded Next. Lost $1,000 yesterday and the target is 3,000. So yeah, we are up 2,500 for the day, out of which 1,100 is already realized and running around 1,400. On the right side you are seeing the micro contracts. On the left side it is the E-mini NASDAQ. ES seems to be finding it hard to trade higher from there, maybe due to these volume imbalances. NQ is looking strong, to be honest. We are 7 minutes away from 3:30. So if you guys trade NQ or use ICT Concepts or trade ES, you guys can subscribe to the channel, join my Discord. It's a free Discord, mainly focused around ICT learning. It's always good to know new traders because if you guys have been trading for a long time, you guys might know how lonely it can be, and not just about loneliness. The accountability factor you get whenever you have other traders around you is really helpful in anyone's growth as a trader. So let me know what you guys trade, where you guys from, and yeah. All right, good close there on NQ, closing above the first presented fair value gap of 130 opening range. I use 1:30 to 2 o'clock as opening range for London session and usually have found it really useful, to be honest. Nice close there again on NQ. ES opens with a huge volume imbalance because of which we might see, yeah, such price action to start with. See if it wants to hold it or continue going on.
A good recovery on ES there if it manages to close bullishly, or just the around the volume imbalance would be fine as well. Nice. Three minutes away from 3:30. So till now, the price action seems to be really bullish, especially on NQ. Took that sell side of the consolidation that we had at the start of London session. Then we had this inversion fair value gap, which ended up playing out pretty well up till now. It has also retested it here on this candle, so looking pretty nice. But don't want to suffocate my trade or move my stop under this low, as we have still got this 1 hour untested and this 5 minute PC untested as well. And to be honest, ES seems to be looking a bit weak. 2 minutes away from 3:30. Very good closer. Next candle is 3:30. I just increase, like, I am just noticing an increase in latency here. At the start of stream, it wasn't this much. Maybe my internet is playing up. All right, 3:30. I'm thinking of closing my long position here. If, because the early and 4 early doesn't look too good for me to hold it. But 15 minutes seems pretty good. 5 minutes seems pretty good as well, and 1 minute as well. So let's see. It is really important to keep toggling to other time frames and keep referring to them. Do not just get stuck on 1 minute time frame. You will forget your bias, and yeah, because if you see, I entered here at around midnight and it's been around 3:30, so I've been in this trade for more than 3.5 hours now.
It looks to me it wants to break lower, to be honest. Now I'm going to stick to buy long bias because so for that hourly thing that I just explained as a confusion, what I'm thinking is that the wick will work it out, and that is what the wicks are supposed to be doing on higher time frames, and that is what they usually do, and that it is going to wick higher initially and then get slapped. That is my bias, but let's see if it do not hold this 5-minute BC strongly, then I might be offside here. Yes, making lower low for the London session there. So I believe this is the initial run, which should be finished by 350 for London session, and then it should continue higher in the later section. But for that to play out, we need to trade inside this inefficiency first and hold it bullishly. Got fill there. Makes a lower low for the on NQ as well for London session. Takes sell side of midnight open range on ES. I like to give it this much room only because we have got some inefficiency below that, which can be used to continue the run higher. Now we are retesting this 5-minute PC on NQ. Let's see if they want to hold the price here and find some support. We are 14 minutes away from 350 macro. Main stocks open at 4 o'clock. Initially seeing some bounce here on NQ. Right.
inside midnight open range on NQ. I would like it to use all of these as bullish inversion now. It holds this busy up till now. Got similar on ES as well. Do not want it to use it as a bearish diversion. I meant bearish PD array. And we should be seeing some discount sensitivity here. Ten minutes away from 350 macro. Remember that I do think that the sell side, there is more damage to be done on the sell side. But I think because we have got 8:30 a.m. high impact news driver, we might drop prices lower around that time. Or maybe I can be wrong. We might drop it lower using London session and the overnight session and then continue the prices higher to all-time high. And maybe around these highs on NQ and ES. So let's see. I'm targeting $4,000 on this account today to pass. Alright, ES bounces off that busy. NQ is still not traded inside of it, which should be fine. If it does not, that will only show us more strength here. We are 8 minutes away from 350 macro. Do
do not really like the close on ES there. I do watch these stocks, Nvidia, Microsoft, Apple, and Amazon while trading NQ because they have got the most weightage in these indexes. They will be opening around 4 o'clock at 4 o'clock, so 17 minutes away from there. I haven't gone through any fundamental news for the day today, but as you guys might know, there is a lot going on politically, and um, I think we are already in the times of war, but hopefully I'm wrong. Things are not really good at the moment, and I'm pretty sure everyone should be taking care of themselves in situations like these. I should be prepared to do so because no one will be coming to save our asses. Things go really bad. Alright, seeing some really good push on ES there. And NQ is replicating that, so yeah, looks good here. I have retested the 5 minute and shown some serious discount sensitivity. Did not, okay, it has referred to that busy. I thought it did not. And yeah, so far so good. Taking off this 5 contracts off at 50 points. If it allows me, that will be $500. And 885, 936, that is another 50 points, so $1,000 there. That is around 1200 if I'm not wrong. So I think I should be passing my 4000 target. If not, that should be fine. Not going to stress it. I did want to add here and should have added here, but that's fine. So we still need to break that high here to be completely bullish and invert this fair value gap completely, because if you notice, I was seeing that as a stop run initially, but that wasn't really the case, and we have made lower low for London session. Now it has reacted really bullishly from here. I am expecting it to continue, and I will actually trail my stop here and trail my stop here.
We've also got Jay Powell being criminally investigated. So that has had some impact on the markets as well. It seems to be continuing high there. Do not like that close there on the last candle and on this candle as well. Also, we are coming off the low lower quadrant of that daily CB and seeing some premium sensitivity there up till now. Next minute, we would be inside macro. I would like to see this candle close bullishly above the midpoint of this inversion fair value gap on NQ. Right, fair enough. If it pushes higher in the next candle. A strong push on ES, especially about to take that high. NQ should close above the daily CP lower quadrant there. I did not close above that, and the next candle is getting slapped.
Remember that we are inside macro, and that is really a bearish signature for me, to be honest. If it does not hold this lower fair value gap, then we might be running lower, at least to these lows, and upset the midnight open range sell side at least. Because we have done that on ES, I am looking it as a bullish S&P divergence up till now. So yeah, this is how the 5 minute looks. We had this small inefficiency CB, which has been respected as bearish PD array up till now, if you guys can see. If it can manage to close bullishly on this 1 minute, this 5 minute candle, then all this bearishness would be upset. Let's look at 15 minute as well. Okay, very good, to be honest. We had this inversion which has been respected up till now. Similar on ES as well. Took the sell side as well, so it should start running higher from here if I'm not wrong. Right, taking a slap there. It's not good for us. 5 minutes away, actually 4 minutes away from stocks open, 4 o'clock. We've got this small inefficiency on 5 minute on ES at least. Nothing like that on NQ. Some water. I would like to see this 1 minute inefficiency to be bullishly inverted.
If it does, I would like to add one more, or maybe I will wait for 4 o'clock. We are just 1 minute away. Always time first and then price, guys. Because I think that it can use this to run it low. Initially, we test this fair value gap and then continue higher because we have got this 5 minute on ES. So half a minute away from 4 o'clock. Ten seconds away. All right, 4 o'clock opens, and we stocks have opened in premium. So if they wanna fill this gap, we might see NQ drop as well. Good push higher initially. Apple has filled the gap completely. Amazon did not really have the gap, and Nvidia is continuing higher. Microsoft is continuing lower to fill the gap. NQ is retesting this first presented fair value gap from the opening range, 1:30 to 2 o'clock. That's nice. Manages to open in there. I would like it to trade bullishly. $1,500 away from our target from here. The reason I moved it a little higher is the fact that we have got the new week opening gap high from this week at 9:49, and then we have got the regular trading hour closing price around 9:59. And if you see the 15 minute, we have got this inefficiency that can be filled. So now the question is, should I move this higher or should I move this higher? Because mm, I am thinking of moving this one here. And then this one. Where do we have the new day opening gap from today? 942.25. So I will take one handle lower from there. Yeah. I'm $1,000 away from here. Basically trying to manage my position in a way where I can hit that target
But these kind of things, like I am not really practiced, to be honest, and this has worked against me most of the time. But let's see. We are $800 away from meeting this target. NQ made higher high for the London session, while ES still has a lot to do on the upper end. We have got the new week opening gap low, which was tested here, 931.75. And it is from this week. I like to take something off here. Retesting the opening range once presented favorably gap again there. Alright, that's good reaction. I was thinking of adding one here, but then I was like, let it be, and trading my stop here. Because sometimes when at 4 o'clock we can see, and others will not truly, to be honest, just making excuses to find a reason. Could have traded my stop here, because usually what happens is for the London session, low or high is created around that 3:30 time, and that is what we expected throughout the start of the live stream. I was commentating for the first half of the London session to be trading lower, providing us some discount, which it has, and then trading higher. So let's see if we can get our targets. Not really liking the last close on ES though. The fact that we have got this inefficiency still untested, but that might be the balance price range because of all this back and forth. To take today's new day open gap low. Okay, I'm already taking one off there. Let a high. Yeah, towards the consequent encroachment of this new day open gap and below the new week open gap line should be a good target. So
These are the price levels that I'm talking about, guys. These are really important price levels, as you can see how it reacted at the start of the opening of London session from there. So I'm trying to book my position throughout this area and then leave one contract around this point, 953. Yeah, 51.25. Expecting that I might hit my $4,000 target. I would like to trade my stop on this as well. So we are basically break even, and up till now on this trade I booked around $1,100. Opened 3 contracts long there, booked one there, opened one again, booked one again, and up on this one we opened 9 there, took 5 off there, took 2 off there, and then entered 3 again there. So taking full position off there. So now Nvidia is taking a little hit. You guys can see because it is in this inefficiency. Amazon as well. Apple seems to be making lower lows. Microsoft has still got a lot of gap to cover. I'm a bit confident on this trade. Not really confident on whether the targets are going to be hit or not, but let's see. Okay, got this volume imbalance. Should use it as discount array. ES also gave another fair value gap here on 5 minutes. Good push right there. Thank you. I've also entered along on silver on the competition account with Funded Next. It's a really tight stop loss. Alright, NQ is about to make higher highs. See how the annotation chart looks like.
NQ has found really nice support from the midnight open range, the upper quadrant there, and then high there. Did not refer the midnight open price. Midnight open price is around here. So we are positioned really nicely just below the midnight open price. If it wants to refer it before making a run higher, then you'll be stopped out break even. The reason I'm not taking anything off is the fact that that is new week opening gap low, which has been tested before. So I am starting to book my targets from 940 areas instead. For 16, macro did its thing, I believe, pretty strongly. 350, and then continuing higher should give us our targets, I believe. Let's see. Still left with 43 minutes in this session. Have to retest the levels, I believe. Good push high there, $500 away from the target of $4,000.
would like it to close bullishly on NQ, making higher high for the day after all this drop. The 150 high there. Now trading above this new week opening gap low. Would like it to use it as a support to run and fill the new week opening gap completely. So that now, yes as well. Would like it to close bullishly above that. And I will actually make my first target here. The reason is that if it is too bearish and does not want to retest the new day opening gaps, then that is the last high up till now it has made, and I should be booking something off there. Nvidia is running higher, has inverted that 5-minute inefficiency bullishly. Amazon is trading inside this volume imbalance. Apple seems to be bearish. So is Microsoft for a little while until it has filled the gap, at least half of it. Alright, so it did not close. Well, the last candle did close above the new week opening gap there, but the next candle traded lower, maybe to refer this inefficiency that we mentioned earlier on. And retesting the new week opening gap low there. ES also took some serious slap from the new day opening gap from today. And has not made higher high for the London session yet. Previously used the high of the new day opening gap really beautifully to do this run lower. So are we going to push prices lower? What I'm going to be doing at least. Might
The reason I'm not adding right now is the fact that on 5 minute we've got it much lower, similar on ES as well. Do not want to ruin my buy position overall. But the way it has used the first presented fair value gap previously here, I don't think I can go no here. And trade my stock to this. And referring this volume imbalance, CS is about to trade inside this inefficiency. We're seeing some bounce there. He is making equal lows, did not trade inside. That only indicates its strength. If it manages to continue higher from here, obviously.
should not trade inside this 5 minute inefficiency, I believe. Thank you, because it has already used it as 1 minute conversion to gap, I believe. And if it gives us any support here, I will add. Oh, okay, I can add 4. Because it showed me a little strength. I added 5 like 4 more micros, expecting a continuation higher. Nvidia is taking a hit to trade inside this 5 minute inefficiency. Nvidia is a really important stock to look at if you are trading NQ. Opened long on gold as well. Just having some fun over the competition account on Funded Next. All right, yeah, and you
taking some hit back around this volume imbalance. I would want it to find some support around this area at least. Lower quadrant of the daily CB, as I think it should head towards its consequent encroachment. It is back inside the first presented fair value gap from the opening range. It uses this fair value gap throughout the London session, guys. Not there. Yes, it's back inside this 5 minute. So it's NQ. So we'll give it the room it deserves. Okay, pushing lower using that fair value gap. Should have waited more to add that full contract. Should have added it here. Would have been a much more discount. It is what it is, part of the process. I expected it to be left unfilled because previously it has been used as a bullish inversion fair value gap on 1 minute, but maybe because it was so big, and then we have also got this lower quadrant of daily CB, it might want to retest this. We also had the similar fair value gap on ES 5 minute. So yeah. Let me know what you guys think about this trade and what market do you guys trade. If we see our annotation charts, it did not really did what we expected it to do, so I wanted it to use the low of the new week opening gap as a support to continue the run for the rest of London session, to retest the new day opening gap and maybe make higher high for the day. But up to now,
doesn't want to do that. We are left 20 more minutes in this session. Right, refer the lower quadrant there. Wanna see some discount sensitivity? I do not like the last candle's close and this candle's open on MQ, and the fact that ES is trading below this. Giving it the room it deserves. Did not make the lower low for London. We'll be losing around $200 there. We'll be making around 400 there. ES has referred this as well, while MQ is referring this. Okay, MNQ makes a lower low. That is so weird. I've never seen this happen. Like NQ and MNQ differing. Yeah, I see. NQ did the same. Alright. So booked around 1140 on this trade. We are 50 minutes left in this session.
Looks like they are going to run it lower for the rest of the session until the news release at least. It is around 20 handles range. I would like to start building my short position from there. So 918, so around risking around 360 there. I would like to add more. So what I think now, the play is they are going to drop it, attack the sell side, and then use the news driver to run prices higher. 5 more there. Yeah. Over there.
So I am trying to pass this evaluation today. So my risk management is based on that. We are inside macro. So what are you guys trading today? If you guys trade NASDAQ or ICT Concepts, I trade here every day during London session, so subscribe to the channel. We are a new community mainly focused on learning and getting better. Got filled there. Want to see premium sensitivity there. If not, then we might be offside. ES is inside this 5-minute inefficiency as well. Wanted to respect bearishly. If it does so, I might add another contract to build up my full position. I'm already risking a lot, to be honest here. So need to see some proper confirmation and direction before adding anything more. ES is referring the midnight open price from today. So I was basically left with 1000 drawdown on this evaluation. Was up like around $3,000 for today in this long position. But I booked at least something up there. Wanted to use this as bearish inversion. But throughout the live stream, I kept on calling price, and I think our price read was pretty good. If you go through the live stream, you'll find out that we were pretty right about most of the session.
do not like the last candle's close. We are inside macro and 4 minutes away from 5 o'clock. That will be finish of London session. I push higher, I do not like that. I'll be right back. That is not good. Showing some strength. Looks like it wants to continue here. I'm left with 1 more minute in London session. Yes, 15 minutes. That's got stopped out on both my gold and silver position. Right, London finishes. We are seeing Nvidia carry on higher. Most of these stocks are pumping higher now. If it gets slapped from there, I'll be adding one more. So then
risking too much, to be honest. $1,600 here, but I'm targeting to pass this evaluation today. If I get stopped out here, this is going to be it for this session, and I might live stream the morning session, 8:30 a.m. We have got CPI release. And good slap there. Expecting it to continue lower for the rest of the overnight session, make lower lows for the day, attack this sell side. I should have got that understood there. Okay. It is what it is. I might have to use it as bearish inversion. We have got this volume imbalance. Don't want it to leave it unfilled, indicating bearishness. What do you guys think of this trade? We are 3 hours in this stream. If you guys have learned anything or found this valuable, please give it a like. Gives me a little encouragement. This is how the hourly chart looks like. Wanted to use this as bearish fair value gap this time. So trying to book something at every level, booking one contract there, then booking another one at the low of this one, then booking another one there, booking actually half up there, and I think we need $3,000 on this trade because we were up $1,000 already.
I don't want it to take the midnight open range and find some support to continue this run higher. I want it to continue trading lower until the news release. Use this fair value gap really nicely. I do not want any candle to be closing the body inside of it anymore. Like the previous close. Basically need 50 handles on 3 contract. First partial will be booked before that. Even the second partial. The second partial is around 50 handles. It's okay. Good push lower. Want it to continue pushing lower. Do not trade inside this range again, because the London sell side has been swept and ES has swept that low. Don't want it to act bullish from here. I do not want any candles to be closing inside of this fair value gap. If you see, we have got this small 5-minute CB, so it can actually create fire inside of it. Still, the 5-minute BC is being respected on 5-minute. Let's slap on NQ from the upper quadrant of the midnight open range from today. This is what I'm talking about.
2 minutes are left in this 5-minute candle to close. I wanted to close below this 5-minute busy, so that it is no more respected as bullish VDRA. Alright, ES is pushing lower as well. We're liking this. ES is about to retest the new week opening gap low from this week. It is at 7004. I would like to book something here because it will also improve my DCA. Do not want this candle to trade higher, in fact close bearishly, because that is the 5-minute candle that we were talking about. Alright, got filled there. You see my sell went a little high there. Now $800 away. $600 away from making the profit. I'm pretty sure anyone who would watch this stream again will learn enormously. We were pretty much on site throughout the session, thankfully, and whenever we were doubting something, we had proper explanation for that. Um, yeah, so pretty happy with this session. Just the fact that I should have booked something over there. Didn't even book anything on the micros or here. That was one thing that really disappointed me a little in today's session. But yeah, getting better every day.
ओहो, देखो तो कौन आया है जी। क्या हाल है वीर भाई, कैसे हो? हंस रहे हो यार तुम? हंस क्यों रहे हो? आई एम गुड, आई एम गुड। What did you miss? You missed the whole session, brother. तो शुरू में मैं यहाँ से लॉन्ग गया था, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे एक उतारा मैंने, फिर मैंने एक दोबारा से यहाँ पे गया, फिर एक मैंने और उतारा। फिर ये पूरा सेशन हम लोगों ने लाइव पूरा कॉल आउट किया, टिक टू टिक। और फिर यहाँ से हमने शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करना शुरू की। अभी यहाँ पे एक पार्सल बुक किया है, और स्टॉक जो है वो तकरीबन ब्रेक इवन हो गया है। एवेल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, टारगेट $4000 है आज का। तो आज ही पास करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए तकरीबन जो रिस्क मैनेजमेंट है वो उसी को टारगेट कर रही है। हमारे पास 8:30 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ड्राइवर है, CPI, so be aware. I would like to be done before that, so that I can sleep peacefully. बट आज का सेशन अगर तुम देखोगे शुरू से, तो काफ़ी लंबा हो गया है, 3.5 घंटे ऑलरेडी हो गए हैं, लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी मज़ा आया, बिकॉज वी वर राइट थ्रू आउट द सेशन, विच इज़ गुड। So Nvidia has taken a hit as well, and I think that it is heading towards at least this inefficiency, which should allow NQ to make another low and give us at least this partial. गोल्ड को भी एक नज़र देख लें। क्यों नहीं देख लें? ओके, देख लेते हैं। गोल्ड पे तो मैं जा रहा हूँ। ये है ना गोल्ड, ये है सिल्वर, ये है गोल्ड। लॉन्ग करते हैं यार इसको, बेहतरीन, एक छोटे से स्टॉप लॉस पे। ये है 4573, 4572। और TP ले लेते हैं दिस हाई 4601। अरे भाई, रिमेम्बर दिस वाज 23,000। आज ये सुबह 1,01,000 पे आ गया था वापस से, क्योंकि कल मैंने बहुत फजूल हरकतें की रात में। तो फिर अभी वापस से 8-9 हज़ार बनाए सिल्वर पे। ये सीन है। कल मैंने क्रूड ऑयल पे भी फजूल के ट्रेड लिए, प्लेटिनम पे भी लिए, तो अब मैंने सोचा कि इस कंपटीशन वाले पे मैं सिर्फ सिल्वर और गोल्ड ही ट्रेड करूंगा। तो क्योंकि अभी मुझे उसकी रिस्क मैनेजमेंट वगैरह भी ज़्यादा नहीं पता कि कितने लॉट पे और कितने पिप्स पे कितना रिस्क है। इसलिए I did not want it to be respecting that daily CB low like that.
This gap is not showing. तो अच्छा, गोल की तो मैं एनालिसिस करनी थी ना यार, मैंने क्या किया है? यार मुझे लगता है कि ये टारगेट हो सकता है लॉन्गर टर्म में, ये सारी इनएफिशिएंसी, क्योंकि मंडे की ये है और सीपीआई आने वाली है 8:30 बजे ना। तो ये जो गैप बना है, ये क्योंकि वीकेंड पे जो न्यूज़ थी जेरोम पावेल वाली, उसकी वजह से ये स्टिल वो है, अनटच्ड है। तो क्या पता ये 8:30 बजे की जो न्यूज़ है, इसको ये लोग इधर ड्रॉप करने के लिए यूज़ कर लें। क्या समझे भाई? तो ये देख रहे हो ना डेली, ये सारी जो इनएफिशिएंसी है गोल्ड पे, ये हो सकती है टारगेट। इस पे यार वो नहीं है ना, सेशन इंडिकेटर्स। तो ये लो हो सकता है शॉर्ट के लिए। लेकिन अगर ये कंटिन्यू कर रहा है हायर, जो मैंने लॉन्ग लिया है वो बेसिकली ये लिया है कि ये वाली लो स्वीप हुए, फिर इसने ये इनएफिशिएंसी दी है हमें, तो एक्सपेक्टिंग इट टू होल्ड बुलिशली मैंने ये लॉन्ग लिया है। सही है भाई। गैप फिल होने के चांसेस समझ, हाँ गैप फिल, देखो गैप, और कभी भी ना गैप को अगर ट्रेड कर रहे हो कि गैप इज द टारगेट, तो ऑलवेज टारगेट दी हाफ ऑफ द गैप। अभी इसमें जाऊं मैं अगर, तो ये देख रहे हो कि ये जो गैप है, अब इस पे क्या करो कि इसकी क्लोजिंग प्राइस ये क्लोज था, ये वो था, ये फिब आ गया तुम्हारा, ये फिब पे जो तुम मैं कल में बताया था ना, -0.5 -1, ये मैं भी यूज करता हूँ। तो इसका जो 0.5 है ना, ये लेना टारगेट, मतलब मैक्स मैक्स पूरा फिल होने का कभी भी वो नहीं किया करो। और सबसे बेस्ट तो टारगेट यही इसका हाई होगा और इसका ये लोअर क्वाड्रेंट। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि एक मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, तो तुम्हें उस इस चीज़ को प्ले आउट करने के लिए एक कंफर्मेशन चाहिए होगी। वो कंफर्मेशन क्या होगी कि इधर से ये नीचे गिरे, या कुछ ऐसी कंफर्मेशन कि ये जो बुलिश ट्रेंड है ये टूट गया है। क्योंकि तुम ऐसे ही शॉर्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हो? हाँ, तो वो मैंने समझाया ना कि मैंने बाय क्यों लिया है। मैंने बाय इसलिए लिया है कि ये जब वो हुआ, स्टॉप लॉस स्वीप हो गया, फिर इसने यहाँ पे इनएफिशिएंसी दी, ठीक है। तो इस इनएफिशिएंसी को बुलिशली ये होल्ड करे, इस पे मैंने बाय लिया है, ठीक है। और ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और ये सारी चीजें। तो समझे भाई, मतलब कुछ भी वो नहीं है, वेट फॉर द कंफर्मेशन, वेट फॉर द डाटा रिलीज, लुक फॉर व्हाट इज मार्केट प्रोवाइडिंग यू, और उस पे इंफॉर्मेशन को कैश आउट करो। क्या समझे मेरे भाई? सो गुड slab there, want it to sustain towards the lower end, but the time period around 5:30 until 6:30, the market is really sideways most of the time. So yeah.
तो बाय की पोजीशन अभी भी अराउंड ब्रेक इवन ही है यार। इसमें मुझे समझाओ कि ये मैं अपनी पोजीशन कैसे डालूं। लाइक मोबाइल पे तो मेरी पोजीशंस आ रही हैं और स्टॉप लॉसेस और वो भी आ रहे हैं, लेकिन देखो ना, मैं भी पोजीशन में हूँ लेकिन मेरे चार्ट पे वो दिखाई नहीं रहा। तो ये 15 मिनट का अगर हम देखें तो ये इनएफिशिएंसी को होल्ड करना इज माय टारगेट एंड माय स्टॉप शुड बी 4575। 4572 ये है, सही है। और मैंने जो वो लॉन्ग लिया था वो बिल्कुल ही लोअर टाइम फ्रेम देखते हुए लिया था, 1 मिनट का छोटे से स्केल्प टारगेट करना। लेकिन जब मैंने हायर टाइम फ्रेम देखा, इसीलिए हायर टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी जो क्योंकि न्यूज़ ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीआई। सीपीआई बहुत ज़्यादा मूव करता है और यूजुअली कैसे मूव करता है कि वो जो जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है, सीपीआई और पीपीआई यूजुअली पहले से ही प्राइस इन हो चुके होते हैं। उसका मतलब ये है कि अ, मतलब नेस्डेक से अगर मैं समझाऊं तुम्हें, तो अभी मैं शॉर्ट इस वजह से हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि ये न्यूज़ पोस्ट नहीं, प्री न्यूज़ प्राइस एक्शन होगा कि प्राइस जो है वो इसमें ड्रॉप करे नेस्डेक में, और फिर ये रैली करे। ठीक है, यूजिंग सीपीआई टू रैली हायर, समझ रहे हो? तो इस वजह से मैं शॉर्ट हूँ अब। इसी तरीके से ना एक्सपीरियंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है कि आप 10 से 20 सीपीआई और पीपीआईज देखो, बैक टेस्ट करो और वो डाटा देखो कि क्या हुआ उससे 1 घंटे पहले और उसके 1 घंटे बाद। तो मैंने जो नोटिस किया है, सीपीआई और पीपीआई में अक्सर यही होता है कि जो उन्हें मेन डैमेज करना होता है और मैनिपुलेशन होती है, दैट इज़ यूजुअली डन बिफोर। एंड देन सीपीआई पीपीआई और ये जो बहुत पावरफुल वो होते हैं न्यूज़ ड्राइवर, इनको ये यूज़ करते हैं टू रन दी मार्केट इन वन डायरेक्शन। तो मैं आज नेस्डेक पे अगर पूछो तो बुलिश हूँ। आई थिंक इट शुड ट्रेड एटलीस्ट टूवर्ड्स दिस हाई using this fair value gap as bullish inversion. ES is already trading at all time highs. तो या, लेकिन पहले ये काम होना है, समझ रहे हो? और कुछ समझ में नहीं आया करे अदिल भाई तो फीडबैक दिया करो, क्योंकि मुझे पता चले और मैं कोशिश करूँ कि बेहतर तरीके से समझाने की। सी ट्रेडर तो ही नहीं, ये तो वो है, मेटा ट्रेडर है आई थिंक। तो ये पता नहीं कौन सा है। तो आज का क्या प्लान है? मतलब तुमने आज वाला ट्रेड ले लिया क्या? तुम कौन सा सेशन वो करते हो? यू लाइक क्लीन चार्ट्स, ओके सर, आई विल गेट माय चार्ट्स क्लीन फॉर यू। इज इट गुड?
खोलो गेम मैटर। जी भाई, खोला, बनाओ। कहीं ना कहीं होगा। अब मैं अभी सुस्ती भी कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं उसमें हूँ। और ये मुझे वाइट पसंद भी नहीं आ रहा है, इसको डार्क करना है। कर लेंगे भाई, कर लेंगे, गिव मी सम टाइम। अभी ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Hey bro, how you doing? Bro, 4 p.m. Like tell me the EST time, the Pakistani Standard Time. तो 4 बजे पता नहीं यार, मेरा पाकिस्तान के हिसाब से सारा टाइम हो गया। देख लो कितना डिफरेंस है, उससे हिसाब लगा लो। तो 4 बजे तो इधर फोर्थ, अच्छा मतलब 24 मिनट बाद तुम ट्रेड करोगे। तो दैट इज 6 बजे। तो वो तो ओवरनाइट सेशन है ब्रो। ना लंदन है, ना न्यूयॉर्क है, ना एशियन है। Hey bro, it's difficult to take your name, so if you can drop your name. Okay. Stefan. How are you doing, Stefan? What do you trade? And what do you use to read the price action? It's always good to know new traders, so keep the chat section busy. So we are retracing higher, which I did not really expect, but because we have got this 5 minute inefficiency, it might refer that before continuing lower, or maybe they have done the damage by taking the mm, midnight opening sell side there. But I hardly doubt that. I think it is going to make lower lows for the day. And Q and some ICT concepts. Yeah, pretty similar to me. This is what I do as well. I've been trading only ICT concepts in the past 2 years, and ICT from ICT, not from any other YouTuber. And only been looking at NQ, I think, for at least 1.5 years. So, yeah, I trade London session every day, live streaming over YouTube and Twitter. So, if that is what you are something looking for, you can subscribe the channel and also join our free Discord, which is mainly focused on education and being better. All right, ES is referring this 5 minute inefficiency. ये लाइव ट्रेड कर रहे हैं, हाँ ना भाई, लाइव ही तो ट्रेड है दिल भाई। ये क्या लग रहा है तुम्हें? और कैसे लाइव होगी? ये सवाल कैसा है? Good to know you, bro. Where are you from?
अदील तुम अभी भी हो? मैं तुम्हें वो ट्रेड ज़ेला वाली भी चीज़ दिखा दूँ, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूँ कि क्या चीज़ है। Romania, oh, that's good, man. How are things there? All right, seeing some slab, although NQ did not refer this inefficiency yet. Okay, it can hold this 1 minute BC. Let's see. So I'm originally from Pakistan, but I'm currently in Australia. I've been here since the past 4 years, came as a student. Now working full time and yeah, doing trading full time as well, to be honest. Like I come home around 2:45 a.m. Eastern Standard Time from my 9 to 5 job and then start streaming at 3 a.m. Eastern Standard Time. So yeah, pretty hectic these days. Still trying to figure out what sessions I should be streaming because sometimes the overnight session is not really worth it, and the main price action actually happens after the market has opened, which is around midnight here in Australia. So, yeah. Trade logic for this short. Okay, so the trade logic for this short is basically if you see the 1 hour, we opened from here for the day, and then Asia basically went lower, taking the New York morning sell side there. Okay, but I think that there is more damage to be done on the sell side before the news release at 8:30 a.m. And because this inefficiency was completely filled and then it showed us no willingness to trade any higher, that is why I shorted, expecting it to make lower low for the day. So, yep, I think that made some sense to you, Adil. और मैं तुम्हें बेसिकली ट्रेड ज़ेला का बताना चाह रहा था कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ. It is a really useful tool, guys, ट्रेड ज़ेला. If you guys are new to trading and don't know about this yet, I would say get this thing as your first expense. So you can create the sessions here. ठीक है, तो यदि आप इधर अपना एक सेशन बनाओगे गोल्ड का, I'll show you. और फिर जो है आप उस पर बैक टेस्ट करोगे, तो इस पे आप देख रहे हो कि ये मेरे सेशन रिजल्ट्स हैं फॉर दिस बैक टेस्टिंग. You can go into this session results and it will show you each and every trade that you took while back testing. तुम जर्नल कर सकते हो, तो ये देखो. I started this account I think from $10,000 and right now we are sitting at 200% return on this. I am backtesting January 2023 on this session. तो ये करते हैं. आप जब ये करोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन सारी चीज़ों से, और मुझे भी समझने में हेल्प मिलेगी कि what are you actually doing with your trading and what are the mistakes we need to work on and what are the things can we work on.
If you guys are finding any value in this stream, just give it a like, gives me a little motivation as a new content creator. And I'm not even getting any time to create any videos or shorts for the channel as I told my schedule. So yeah, but we are going to be getting better. Do not stress. Actually, I want someone to be joining my project as a team. If someone is as a good video editor here, do hit me up over my email, which you can find in the details of the channel. ठीक है दिल भाई, ट्रेड ज़ेला वाला करना है ना फिर सीन, क्या समझे इसमें? तो देखो, मैं एक और चीज़ तो मैं दिखाता हूँ। सेशन रिजल्ट्स में आप गए तो आपके पास यहाँ पे आपका विन रेट आ गया, ट्रेड विन परसेंटेज, फिर डे विन परसेंटेज के कितने दिन तुम जीत रहे हो। ठीक है, इधर सेशंस आ गए कि जो तुम्हारे सेशंस हैं, इधर तुम्हारे इस सेशन का रिजल्ट आ गया, फिर डे व्यू आ गया, हर अगले दिन का रिजल्ट आ गए। ठीक है, कि दिन में तुमने क्या किया है पूरे दिन, और उस दिन के अलग से ट्रेड, उस दिन का इकोनॉमिक कैलेंडर, सारी चीज़ें हैं। ट्रेड व्यू का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें जाऊं तो ये मुझे जाके दिखा देगा चार्ट्स में कि कहाँ पे मैंने एंट्री ली और कहाँ पे मेरा एग्जिट था। तो देख रहे हो, ये लॉन्ग था तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री ली, और फिर स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री ली, और फिर मेरे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे। तो ये ट्रेड भी हो गया। फिर नोटबुक है, इसमें तुम चीज़ें डाल सकते हो, अपनी स्ट्रेटजीज हैं, इसमें अपनी स्ट्रेटजीज डाल सकते हो, तुमने क्या फॉलो किया क्या नहीं। तो वेरी वेरी हेल्पफुल। और फिर ये जो हैं तुम्हारे, ये लाइव अकाउंट होंगे। ये 3 अकाउंट हैं जो मैंने उड़ाए हैं कल। तो आप देख सकते हो, रेकलेस ट्रेडिंग, एंड दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग विद मी व्हेनेवर आई एम बाय माई सेल्फ। हाँ, यूज़ करना कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वंस आपने ये सेशन सेट कर दिया ना उसमें, और सेशन में भी ये करना है कि जाके सिर्फ वो लिख देनी है। ये कहाँ गए, बैक टेस्टिंग। तो सेशन में क्या करना है कि क्रिएट सेशन, सेशन नेम कुछ भी डाल दो, डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल दो, स्ट्रेटजी कुछ भी डाल दो। सिंबल्स में तुम अपना गोल डालोगे या जो भी तुम्हारी मार्केट है, स्टार्ट डेट कौन से डेट को तुमने मार्केट डेटा बैक टेस्ट करना है, और एंड डेट, और स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट। और ये क्रिएट सेशन हो जाएगा। वंस ये सेशन क्रिएट हो गया, फिर तुम इधर जाके प्ले करोगे, और ये जो है क्या नाम है, जहाँ पे भी तुमने सेशन छोड़ा है अपना लास्ट, वो आप जो है यहाँ पे वहाँ से वो शुरू हो जाएगा। ये आप प्ले करोगे तो ये मूव होना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। बस सिंपल एज दैट। और फिर आप अपने ट्रेड्स लोगे यहाँ पे, बस वो करके बाय सेल, जिस तरीके से भी तुम्हें लेना है। तो ये साइंस है मेरे भाई, क्या समझे। I'll help you with your shorts, I'll charge for it. Okay, boss. Much appreciated. But thank you. We might, you know, work around some arrangement. So, pretty good up till now.
Pretty happy with this trade. Ran a little higher but did not refer the 5 minute inefficiency that we thought it will be referring. So that is a bit concerning for me because it can go higher there and use it as bullish inversion as well. So even ES just made equal highs from the inefficiency. Let's see. We are inside macro now, 550 to 610 macro. Usually this is not really heavy macro. By heavy I mean like where you can expect some serious price action. Usually it is the 650 to 710 and 750 to 810 during the overnight session, and obviously the 850 to 910 as well. So the closer you get to the market open, the price action seems to get a little smoother and better. Alright, pushing high there. Yes, you see, that is what I was mentioning. That because the drop we were seeing was not after it has referred this inefficiency. That is why I was a little about it. Anytime, boss, anytime. My pleasure. We are here to get better every day and grow better together. So we are $1,000 away from meeting our today's target profit. We are targeting $4,000 on this funded next bold challenge, where we lost $1,000 as a daily loss limit hit yesterday because I went really reckless. And the price action was pretty clean though, but I couldn't make any sense of it. Although it was such an obvious bullish SMT divergence, and Q never took the yesterday's low while ES did, and then it continued on rallying higher. But unfortunately, I went short from there, then added another short after closing my session at $300 profit, and then it completely made me go reckless and couldn't manage my emotions or myself. After that, I just kept on entering, re-entering, and blew all my 350K Tradify evaluations, which were on day two, by the way. I had already made $1,000 on day one, so that sucks basically. On this bold challenge, you can actually pass it in one day by adding an add-on for I think 10% of the price. So basically targeting 4,000 for the day today. Let's see if we can get it. We were initially long from here and should have taken something there but did not. Went in 3 contracts and some micro contracts as well. I took one off there, bought another one there, took another one off there. Then expecting it to trade inside this inefficiency on 15 minute and retesting the new day opening gap low, but we went went short. I was actually booking one partial at the high of this high, just in case that it wanted to actually do this, but it never even made to there even. So expecting bearishness, continued bearishness until the news release. So yeah,
Good push lower. Liking it. If you guys trade NASDAQ or ICT Concepts, I trade every day here, especially the London session. So just subscribe the channel, and we have also got free Discord, mainly focused on education and getting better. So, and it's a new community. So I think it will be really helpful for anyone learning how to trade and who have been trading for the accountability purposes. Right, it is trading a little higher. Why? What is this? No, no, I don't know what to do. Oh my god. Okay. Anyways, let's just focus on this for now. Three minutes away from 6 o'clock. 6 o'clock, we get new 4 hour candle open as well. So want it to expand lower and take the make lower low for the day. Um, yeah, so that is the bias. We are left with 2 minutes in this 4 o'clock candle. Let's see what we get. NQ is looking pretty weak while ES seems to be showing some strength from here. This is how the 1 hour looks. Still got some inefficiency on the higher end ES, but because we have got 8:30 news driver before that, I'm expecting it to sweep this low and this low. Right, 30 seconds away from 6 o'clock. तो आदिल भाई आप समझ रहे हो कि टाइम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी स्टडी टाइम के लिहाज से कर रहे हो ना, ऐसे कि 6 बजे न्यूयॉर्क के क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत रिपीटिंग फिनोमेनाज है। आप देखो तो 1 महीना भी आप सिर्फ स्टडी करके देखो, आप बोलोगे फक मैन, ओनली इफ आई हैड डन दिस बिफोर। और उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक है, मतलब मैं आपको समझा सकता हूँ कि ऐसा क्यों है। ऑलराइट, 6 o'clock opens. Can provide a little premium initially. I'll go through some news for the day. No, I didn't go to the office, so that is where I usually go to through the fundamental analysis and try to see. Although I'm not really a fundamental analysis trader, but you should know what is going on.
inside the market and especially around the world, especially these days when since Trump has been in the office. All right, Trump says any country doing business with Iran will face 25% US tariff. Venezuela stocks soar 130% to record highs as for the US also spurs economic turnaround hopes. Okay. You see, sometimes market lie. Global central bankers unite in defense of Fed chair. Okay. Yeah. Right. Expecting it to start expanding lower. I'm taking one off there, not even targeting the low of the day. Oh, pretty good. You can guess easily if you are showing up every time on fixed time. या क्योंकि सीन ये है कि फॉर एग्जांपल कि आपको लगता है कि अगर किसी को $1 million के कोई स्टॉक खरीदने हैं या कुछ भी खरीदना है तो वो अपने मोबाइल से खरीदेगा नहीं। तो वो जो है ऑर्डर्स जाते हैं वो क्लियरिंग कंपनीज के पास जाते हैं, तो कुछ क्लियरिंग कंपनीज हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो फिर आपके ऑर्डर्स क्लियर करती हैं, क्योंकि $1 billion या $1 million की बाइंग या सेलिंग कैन कॉज वेरी मच वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। तो उसके लिए एआई सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक टाइम पे अपने ऑर्डर्स जो हैं वो फायर करते हैं। तो इसीलिए जो टाइम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट है ना, कि किस टाइम पे किस सेशन पे मार्केट ने क्या किया है और फिर आगे वाले सेशन में क्या एक्सपेक्टेड है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका काफ़ी चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आने लगती हैं यार। I'd want it to use either this in efficiency on 1 minute or either that on 5 minutes to continue the run lower. Can also use that 1 hour BC that we were looking at to use it as bearish inversion this time. तो मैं तो तुम्हें एडवाइस करूंगा कि न्यूयॉर्क सेशन का जो लंच सेशन होता है ना, वो सबसे आसान सेशन है इन माय पर्सपेक्टिव। अगर आप अपनी ग्रीड वगैरह को सही तरीके से मैनेज कर सकते हो ना, क्योंकि वो क्या करता है कि अगर किसी भी दिन मॉर्निंग सेशन ने सिर्फ एक ये किया है ना, कि एक
एक ये पूरा मॉर्निंग सेशन है, ये पर्पल और ग्रीन डब्बा। तो अगर एक वे में वो गई है ना, तो लंच सेशन हाईली वो है कि वो किसी तरीके की रिट्रेसमेंट देगा, एटलीस्ट 25% ऑफ द रन या 50% ऑफ द रन। वो रिट्रेस करेगा ही करेगा। ठीक है। और अ, अगर उसे कंटिन्यू भी करना हुआ तो वो वहां से कंटिन्यू करेगा इसी तरीके से। तो अ, मेरे ख्याल से लंच सेशन बहुत वो होता है। बस उसमें क्या होता है कि आपको आपको जब आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे होते हो उसमें बहुत आपको कॉशियस रहना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इधर से इस रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूएशन लिया फॉर मेनी अदर रीजंस, क्योंकि यहाँ पे येस्टरडे हाई बैठा हुआ है, यहाँ पे डे बिफोर येस्टरडे हाई बैठा हुआ है, तो वो अभी तक स्वीप नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लंच सेशन में आपने देखा कि मॉर्निंग जो है वो सीधी खड़ी हुई है तो आपने शॉर्ट कर दिया 50% टारगेट करते हुए। आपको बाकी चीज़ें भी कंसिडरेशन में लानी है। तो अगर आपने ये लॉन्ग लिया था तो एंड इफ यू ट्रेल योर स्टॉप आफ्टर दैट टू सम लेवल, तो यू वुड हैव बीन स्टॉप्ड आउट। तो लंच सेशन का सवाल इसके आई थिंक और कोई मसला नहीं है। इट इज़ अ रियली गुड सेशन टू ट्रेड स्पेशली फॉर बिगिनर्स टू स्टार्ट विद। ऑल्दो आईसीटी भाई कुछ और बोलते हैं, ही थिंक्स दैट ही ask all his new traders to avoid the lunch session. Got you, sure. Book partial when I can go against time? Question mark. समझ में नहीं आया भाई। बुक पार्शियल, भाई पार्शियल में इस वजह से बुक नहीं कर रहा क्योंकि मैं $4000 जो है वो टारगेट कर रहा हूँ इसी रन से। तो मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पहले इसमें आ सकती है। ठीक है ना, ये जो इनएफिशिएंसी है। और उधर से मैं चाहूँगा कि ये जो है ये अपना जो रन है लोअर की तरफ वो कंटिन्यू करे। तो ना मुझे पार्शियल लेने की इधर ज़रूरत है क्योंकि मैंने पार्शियल यहाँ पे लिया तो है। मैंने यहाँ पे भी पार्शियल लिया है, ये एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है, और यहाँ पे मैंने 4 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तो बिल्कुल लो पे तो मैंने बुक किया है। वाई वुड आई बी कंसर्न? तो अगर तुम ये देखो तो इसमें भी देखो ना, 874 पे मैंने वो बुक किया। 874 इज दिस प्राइस पॉइंट। इधर 881 पे किया, 881 इज दिस प्राइस पॉइंट। तो पार्शियल वाला काम तो मैंने कर लिया अपना, और बहुत अच्छे पार्शियल लिए टू बी ऑनेस्ट। अब बस ये है कि या तो ये मुझे यहाँ से स्टॉप आउट कर देगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, या तो ये कंटिन्यू करेगा तो मेरे जो डेली टारगेट है वो आराम से हिट हो सकता है। इस वजह से मैं ये जो रिस्क मैनेजमेंट मैंने की हुई है ये नहीं ख़राब कर रहा। क्योंकि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे पार्शियल ले लेता हूँ और फिर ये जब नीचे जाने शुरू होता है तो जब मैं ऐड करूँगा तो मेरी जो ये वो है बाय है ये ख़राब हो जाएगा, और फिर जो मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा वो किसी इनएफिशिएंसी के अंदर ट्रेल करना होगा टू मेक श्योर कि या तो छोटा स्टॉप लॉस हो या ब्रेक इवन हो। लेकिन अगर ये देखो तो इसमें इस प्राइस एक्शन में सिर्फ ये इनएफिशिएंसी है। हाँ, ये इधर भी आ सकता है, इस छोटी इनएफिशिएंसी में ट्रेड करना है तो इसमें मैं स्टॉप आउट हो जाऊंगा। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो क्या समझे भाई? बाकी टाइम क्वेश्चन मार्क से मैं कुछ समझ नहीं पाया कि कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो। We are 4 hours in this live stream, so yeah. इनएफिशिएंसी कैसे पता चलती है? इनएफिशिएंसी इज द बेसिकली अ फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप होता है आपकी कैंडल 1 और कैंडल 3 में डिस्टेंस। तो मैं ये एग्जीक्यूशन हटा दूं अपनी। पार्शल्स का समझ में आ गया ना भाई? पार्शल्स बिल्कुल नीचे ही लो पे लिए हुए हैं, तो ये सीन है। अब अगर इसको तुम कैंडल 1 लो, ये 455 की 5 मिनट की कैंडल, और इसका लो देखो, और इसको अगर तुम कैंडल 3 लो 505 की,
तो इसके लो में और इसके उसमें तुम ये देख रहे हो, ये जो मैंने ड्राइंग्स बनाई हुई है, ये सारी इनएफिशिएंसीज बनाई हुई है। ठीक है, तो ये इनएफिशिएंसी है। अगर मार्केट बेरिश है तो वो यहाँ पे वापस आ सकती है टू कंटिन्यू दिस रन लोअर। ठीक है, तो इफ आई वाज एबल टू एक्सप्लेन दैट। मार्केट सिर्फ दो चीज़ों के पीछे जाती है। मार्केट या तो हाई और लोस के पीछे जाती है क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं, या मार्केट इनएफिशिएंसीज के पीछे जाती है। समझ लो। न्यू ईयर लंच का टाइम, न्यू ईयर लंच का टाइम जो है वो शुरू होता है 11:30 बजे। 11:30 बजे शुरू होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि अगर मैक्रोस की तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग है, मैक्रोस जो है वो हर घंटे के एंड के 10 मिनट और हर घंटे के शुरू के 10 मिनट, तो वो 20 मिनट का जो टाइम इंटरवल है, 10:50 और 11:10 वाला जो मैक्रो है, कभी कभी वो ट्रिगर कर देता है लंच मार्केट प्रोफाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 9:30 से 10:30, 10:40 तक मार्केट एक ही साइड में बहुत स्पीड से गई है, तो जो 10:50 और 11:10 और 11:30 वाला टाइम है, अगर मार्केट को रिवर्स करना है या ज़्यादा रिट्रेसमेंट करनी है मॉर्निंग वाले रन में, तो वो अपना रन जो है वो बेसिकली 10:50 और 11:10 वाले माइक्रो में शुरू कर देती है, मैक्रो में। हाँ, फेयर वैल्यू गैप अगर पता है तो फेयर वैल्यू गैप इज बेसिकली दी इनएफिशिएंसी। अब वो इन्वर्ट भी हो जाते हैं कि जैसे ये अगर बेरिश है और अगर मार्केट इधर आती है और एंड देन इट पुशेस हायर, तो दैट विल बी अब एन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। क्योंकि इसको काम क्या करना था, इसका मेन काम था कि टू पुश प्राइसेस लोअर, या बट इट नेवर पुश्ड प्राइसेस लोअर, इनफैक्ट इट यूज्ड इट टू ग्राइंड प्राइसेस हायर। तो वो इन्वर्ट हो गई, इसकी जो मेन वो थी कैरेक्टरिस्टिक या। पाकिस्तानी रात के 11, आई थिंक सो, आई थिंक सो। यार एक और वीडियो मैंने डाली है डिस्कॉर्ड पे ना, आईसीटी की, वो मेरे ख्याल से इतनी लंबी भी नहीं है, 40 मिनट की है, 50 मिनट की है। तो उसमें अगर तुम्हें रात की तरफ ट्रेड करना है ना पाकिस्तान में, तो पीएम सेशन के लिए इतनी बेहतरीन वो वीडियो है। उसमें जिस तरीके से उसने क्लोज ऑफ द डे किस तरीके से बुक होता है वो जो समझाया है ना, तो 1:30 बजे से न्यूयॉर्क टाइम, 1:30 बजे पीएम, 1:30 से जो 4 बजे का है ना, उसमें बहुत बेहतरीन सेटअप बनते हैं। और क्योंकि आपके पास पूरे दिन का डेटा होता है, तो यू आर प्रिटी श्योर अबाउट द थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन। और अगर नहीं होंगी क्लियर तो आप बस ऑफ साइड हो जाओगे। तो कभी कभी तो मैं यही सोचता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो जो मॉर्निंग सेशन ही शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है कोई 12 बजे, डे लाइट सेविंग के बाद। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार मैं अगर पीएम सेशन ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर दूँ, तो पीएम सेशन मेरा शुरू होगा, अगर 1:30 बजे वो शुरू हो रहा है तो रात के 4 बजे, ठीक है, मैं ऑफिस से आके जल्दी सो जाता हूँ, एंड देन आई ट्रेड पीएम सेशन। So I'm still very confused about the sessions that I want to play in, not because I cannot execute in them, but because of my routine. और उस जो आईसीटी की वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, वन ट्रेडिंग सेटअप फॉर लाइफ है मेरे ख्याल से, मैं ढूंढ के अभी लाता हूँ सामने। हाँ ये आ गई ना, वन सेटअप फॉर लाइफ। हाँ, 2023 की जब तक की है, और दिस इज द वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट।
ICT मेंटरशिप बेस्ट वीडियो। ये बहुत लंबी है, सॉरी, 90 मिनट की है ये, बट आई हैव टेकन लाइक सो मैनी नोट्स आउट ऑफ इट सेवरल टाइम्स। तो ये सीन है ब्रो। डिसाइड एक टाइम, लेकिन फिर उस टाइम से ना टिक के रहो और कभी भी वो चेंज नहीं करो। मेरे ख्याल से ये मैंने डिस्कॉर्ड पे भी डाला हुआ है स्टडी वाले सेक्शन में। So moving lower now, let's see if they want to use it, this volume imbalance to run prices higher. Let's see what ES is doing on 1 minute. All right. Got these equal highs. That is what is making me think that it can do another run higher. Trade inside this inefficiency. We've got very nice volume imbalance there. But if it does not do so before the news release, then I think that that will only indicate us more bearishness or weakness. जी अदिल भाई, समझे कुछ? हाँ चेक करो ब्रो, वो बहुत अच्छी वीडियो है। अगर तुम ये समझते हो ना कि भाई सेशंस होते हैं, सेशंस के हाई लोज होते हैं, तो उसके नीचे लिक्विडिटी होती है, उसके ऊपर लिक्विडिटी होती है। तो अगर उसे रिवर्स करना है मार्केट को, तो वो इसके नीचे से कर सकती है या उसके ऊपर से कर सकती है, क्योंकि लिक्विडिटी बैठी हुई है। तो लिक्विडिटी के पीछे जा रही है मार्केट, स्टॉप लॉसेस के पीछे या इनएफिशिएंसीज के पीछे जा रही है। इनएफिशिएंसी के पीछे क्यों जा रही है? क्योंकि वो पेंट कर रही है, एक तरीके से ऐसे समझो। तो देखो यहाँ पे मार्केट क्यों आके रुक गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट की इनएफिशिएंसी थी, ये देख रहे हो। ये बिल्कुल ओपन थी इ, इस टाइम तक, ठीक है। और फिर इसने ये यहाँ पे लिक्विडिटी भी होगी, स्टॉप लॉसेस होंगे, जो लोग यहाँ से लॉन्ग गए हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आके रुक गई इनएफिशिएंसी में। अब वो ऊपर की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि इधर भी इनएफिशिएंसी है, ठीक है। तो अब अगर उसे बेरिश है और अगर उसे ये वाली लिक्विडिटी लेनी है, तो वो इस इनएफिशिएंसी को टैप करते हुए और नीचे जाएगी और ये वाली लिक्विडिटी लेगी। वो हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कल का मॉर्निंग सेशन के लोज यहाँ पे पड़े हुए हैं ईएस के। तो इस तरीके से मैं मार्केट को रीड करने की कोशिश करता हूँ। और देखो, अगर तो ईएस ने एक इसमें टैप कर लिया है इनएफिशिएंसी में, तो अगर वो वॉल्यूम इम्बैलेंस ये होता है कि ये देखो, ये मार्केट का क्लोज जो था वो ये था, ठीक है। अब इस मार्केट को खुलना, अगर कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं होता तो खुलना इसको यहाँ पे चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं खुली, वो यहाँ पे खुली। तो ये जो छोटा सा गैप है, दिस इज वॉल्यूम इम्बैलेंस। क्या समझे मेरे भाई? तो ये इनएफिशिएंसी वाला अपना कॉन्सेप्ट समझ लो कि भाई इनएफिशिएंसी से लिक्विडिटी और ये सारी चीज़ें, इस तरीके से मार्केट पढ़ने की कोशिश करो। टाइम एलिमेंट डालो उसमें, न्यूज ऑफ टाइम एलिमेंट, ठीक है। मिडनाइट ओपन प्राइस, सेशंस की हाई लो लिखो। अ, और ये समझो कि प्राइस जो है वो फैक्टोरल है, इसका मतलब ये कि ये 1 मिनट है, ठीक है। अब 1 मिनट में तुम्हें यहाँ पे इनएफिशिएंसी दिख रही है, लेकिन 5 मिनट में अगर तुम देखो तो तुम्हें यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी दिख रही है जो कि अनटैप्ड है। तो वो 1 मिनट वाली जो सिबी है, उसके मोस्टली चांसेस हैं कि ये जो है ये बुलिशली वो इन्वर्ट करे।
बुलिशली इन्वर्ट करके वो 5 मिनट वाली में जाए और फिर वहां से गिरे। लेकिन अगर ये बहुत बेरिश है तो वो यहीं से गिर जाएगी। आ, ये कुछ करता नहीं है, मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइस आके रिएक्ट कर सकती है। इफ यू आर बेरिश तो तुम्हें जो है, और ये सबसे वीकेस्ट पीडीआर है, मतलब ये इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं होती प्राइस एक्शन में। तो कि प्राइस यहाँ पे आए, मतलब तुम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगाओ, ठीक है? या तुम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगाओ इस, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ पे प्राइस के चांसेस हैं कि वो रीटेस्ट कर सकती है, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी वॉइड है, यहाँ पे सही तरीके से ट्रेडिंग नहीं हुई है मार्केट। ये जो प्राइस प्रिंट हो रही है ना, इसको ये समझो कि कोई बंदा जो है वो पेंट कर रहा है दीवार पे। तो वो अगर एक डायरेक्शन में गया है तो वो वापस आएगा उस डायरेक्शन में, अगर उसमें बहुत सारी इनएफिशिएंसीज हैं। समझे? ये इस एनालॉजी से मुझे काफी समझ में आना, मतलब हेल्प हुई है कि वो पेंट कर रहा है। तो अगर कोई रन ऐसे मिस हो गया है, देख रहे हो ना, तो तुम्हें अगले दिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम इस रन में 50% या 20%, 25% की रिट्रेसमेंट ले लो। ठीक है? जिस तरीके से हमने सुबह ली। तो इस तरीके से आप जो है वो, मतलब मैं एटलीस्ट मार्केट पढ़ता हूँ या पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अब देख लो, ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है ना, मुझे चाहिए कि मैं इसको थोड़ा सा और रूम दे दूँ, ठीक है, अपने स्टॉप को। क्योंकि वॉल्यूम इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप की तरह इतना अच्छा नहीं होता कि वो मिड पॉइंट पे आके रुक जाए या लोअर क्वाड्रेंट पे आके रुक जाए। इट कैन इजीली ट्रेड थ्रू, और फिर बॉडी जो है वो उसको रिस्पेक्ट कर रही होगी, व्हाट आई हैव नोटिस यूजिंग वॉल्यूम इम्बैलेंसेस। तो हमेशा पोजीशन योरसेल्फ इन अ वे कि जहाँ पे तुम्हें वापस नहीं घुसना पड़े। क्योंकि अगर आप वापस घुस रहे हो सेम ही ट्रेड में कि मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस करके वापस मुझे घुसना पड़े, तो वो सेम बायस पे मेरे दो रिस्क एलिमेंट हो जाएंगे, तो वो मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए लॉन्गर टर्म में फाइनेंशियली वायबल नहीं है। We are 2 hours away from, almost 2 hours away from the news release. Right, good slab there on NQ. Let's look at ES on 1 minute. So I think it is going to time distort and make some sort of consolidation range until the that inefficiency up till 650, and then use 650 to 710 macro to drop prices lower. This is what I think. Let's see. एक और चीज़ बताता हूँ अदिल भाई मैं आपको।
तो जैसे ये डेली का चार्ट है ना, डेली के चार्ट्स के जैसे ये विक है पूरी, तो इस विक को तुम ग्रेड कर सकते हो। ग्रेड कैसे कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो कि डेली डिस्काउंट विक तुमने लगा दिया, तो 0.75% आ गया, 0.5, 0.25 और 0। यही तुम प्रीमियम विक्स में भी कर सकते हो। तो फेयर वैल्यू गैप तो फेयर वैल्यू गैप, और ये जो विक्स होते हैं ना, ये मेनली गैप की तरह ही यूज होते हैं। तो इनके तुम, ये क्वाड्रेंट लेवल्स होते हैं ना, इन पे तुम बहुत अच्छे वो देख सकते हो, सेटअप्स देख सकते हो। तो तुमने जब ये देखा कि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुई और फिर ये स्वीप हुआ, उसके बाद जब ये प्राइस यहाँ पे आई, तो इसने बुलिशनेस शो की ना हमें आफ्टर वो, तो तुम यहाँ से लॉन्ग ले सकते थे अंटिल दिस हाई। समझ लो। तो इस तरीके से डेली कैंडल जो है ना, द डेली चार्ट, दैट इज द मोस्ट यूजफुल चार्ट आई वुड से। हमेशा अपना बायस वगैरह और जो ट्रेड एनालिसिस अगर तुमने डेली पे बेस करना शुरू कर दिया ना, तो योर विन रेट विल इंक्रीज एक्सेप्शनली। So London basically provided us with this setup only. If we see around 340 after this sweep, we could have taken a long until that high, and maybe the short that we took towards the end of the session, targeting the low of the midnight open range there. That was another trade. So pretty good session. Happy with it. देख लो, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। अब इसी वॉल्यूम इम्बैलेंस के नीचे ये फेयर वैल्यू गैप भी है। कभी भी फेयर वैल्यू गैप के साथ वॉल्यूम इम्बैलेंस होना, तो आप उस फेयर वैल्यू गैप में ही वॉल्यूम इम्बैलेंस को इंक्लूड करके फेयर वैल्यू गैप बनाते हो। ये एक और की पॉइंट है। ठीक है, इसको आप यूं नहीं बनाओगे, समझे? इसको आप वॉल्यूम इम्बैलेंस इंक्लूड करोगे। Gold position is around break even as well. So I am expecting it to run higher when the NASDAQ will be dropping lower. Okay. So I think this as well is waiting around 6:30ish to 6:50 time. Okay, we have already got 6:30. Good slab there on 6:30.
So on the right, we have got for our MNQ. MNQ is basically the smaller contract for NQ. And I'm expecting it to drop it lower. We can see the similar thing on NQ as well. So taking one partial here, taking this complete position off there at the low, and then leaving one to see if we can hit our $4,000 profit target for this day. Do let me know in the chat what do you guys think about this position. And patience is one of the important thing that if you want to be a trader, you need to really exercise patience because you cannot do anything. Market is going to move when it is going to move, right? So give your trades enough room, learn from your mistakes, keep journaling your trades, your emotions and everything. And yeah, and build consistency, keep showing up every day so that you can improve. So good slab since 6:30. That is nice. I really like it. I think it should not spend any more time there, and we should see speed towards the lower end, or maybe time distortion until 650 at least. We are $700 away from hitting our profit target. And I've been here today like 3 times, if I'm not lying. Because when I was long, yeah, we were away like $800 or $700 at our equity high. Okay, good push lower. For our candle has flipped bearish. क्या हुआ दिल भाई, चले गए हो क्या? So $500 away. Wait, lower low. Thinking of booking something here. Yeah, I'll book something here. Right now. My profit taking hasn't been really at peak recently, and I have been leaving a lot of money on the table.
ES never made low. Also got this inefficiency on 1 minute, which it can find support from. Almost there. Uh, yeah, almost there. $700 away. I hope it is showing my TP, right? I think, yeah. Mhm. This doesn't look good, to be honest. I do not want it to trade into that inefficiency now. So Nvidia is taking a hit. It used this as inversion, which we did not really expect, but now it seems to be coming for this low and this low. Microsoft has filled the gap completely, and Amazon seems to be trading higher as well. So, pretty tight here, to be honest. No risk, no Ferrari. Yes, bro. No risk, no Ferrari. No risk, no gain. But the risk should be calculated and educated. Just took the liquidity and going upside, but we have got inefficiencies on the upside, right? Let's see, 5 minute, 5 minute. तो हाँ सही है, मैं बुक कर सकता था, लेकिन 4 आवर की जो लो है वो अभी भी इंटैक्ट है, पिछली कैंडल का भी। और हम जो टारगेट कर रहे हैं वो ये लो टारगेट कर रहे हैं, तो अभी तक हमारे टारगेट पे पहुंच ही नहीं है। एंड दिस इज पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। क्या कर सकते हैं भैया जी।
कौन सी लिक्विडिटी को टैप करें? ये लोअर इसकी ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है बॉस, लेकिन ये है कि हाईली प्रोबेबल आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस रीडिंग से क्या लगता है। तो मुझे ये लगता है कि इट शुड मेक लोअर लो फॉर द डे बिकॉज वी आर 2 आवर्स अवे फ्रॉम द हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ड्राइवर। तो मुझे लगता है कि उससे होगा क्या कि रिटेल को या किसी को जिसको इतनी प्राइस रीडिंग का पता नहीं है, दे विल बी शॉर्ट एंड दे। और जो सीपीआई का वो है वहाँ से मैं बुलिशनेस वो कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर वो यहाँ तक नीचे ले आते हैं तो रिटेल के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो उसे लॉन्ग करें। तो ये मेरा ओवरऑल बायस है इस सेशन का अंटिल 8:30। अगर वो नहीं होता तो इट्स फाइन, वी हैव आई थिंक रियलाइज कितना है, $1600 है। और यहाँ पे अभी भी जो रिस्क है वो अराउंड $210 इधर है, और 3 इधर है, तो $30 इधर है, तो $250 का रिस्क अभी भी ऑन है, 1600 बना हुआ है। आ, तो आई वुड स्टे विद माई बायस एंड विद माई स्टडी रादर देन इधर एडिंग है या अपना पार्शल जो है वो ऊपर करूं, जो कि मैंने अभी थोड़ा सा ऊपर किया है। लेकिन आ, वो सिर्फ इस वजह से किया है क्योंकि रिसेंटली व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज के आई हैव बीन लीविंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल, और मेरे ये जो पार्शल्स लेना और टारगेट लेना है वो बहुत इम्प्रूव हो सकते हैं। तो या इफ नहीं टैप करता तो आप कहाँ बाहर होगे ट्रेड से? मतलब समझा नहीं मैं, क्या टैप नहीं करता? मेरे स्टॉप लॉसेस है ना, ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो ये मैं बाहर हूँ ट्रेड से, ये मेरा स्टॉप लॉस है। ये छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो यहाँ पे मैंने 5 कॉन्ट्रैक्ट खेले हुए हैं जो आधा है इसका, और यहाँ पे मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट खेले हुए हैं, तो अगर तुम समझो तो मैंने 2.5 कॉन्ट्रैक्ट खेला हुआ है। अब देखा कि वो गया, ऊपर गया। अब तुमने देखा कि उसने ये लो लिया और वो ऊपर जा रहा था, तो यू मेंशन मी कि इट इज़ गोइंग हायर। अभी वो नीचे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इनएफिशिएंसी है, क्या पता वो ये सिर्फ फिल करने आ रहा हो और इसको वो कंटिन्यू करे इसी रन को हायर, और फिर वो क्या पता यहाँ से मुड़ जाए। तो इट ऑल मतलब जो भी है वो फॉर श्योर नहीं है। अब आप अपने आप को किस तरीके से रिस्क मैनेज करते हुए और दूसरी चीज़ें मैनेज करते हुए अपनी प्लेस कर सकते हो इन अ पोजीशन एंड मेक समथिंग आउट ऑफ इट, दैट इज़ द मेन थिंग। जो कि मुझे लगता है कि मैं अभी परफेक्टली पोजीशनड हूँ और मुझे कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ इट गोज अगेंस्ट मी आई विल बी स्टॉप्ड आउट विद अ प्रॉफिट ऑफ $1,300 ऑन दिस पोजीशन। इफ़ आई एम यू नो प्रॉफिटेबल तो मेरा ये अकाउंट पास हो जाएगा, समझे, बगैर एक और बटन दबाए। क्योंकि जब भी आप बटन दबा रहे हो ना तो आप अपने आप को रिस्क से और मैनेजमेंट से, सारी चीज़ों से वापस से एक्सपोज कर रहे हो। तो मैं ऑलरेडी जो हूँ वो कितने $30 30 पॉइंट्स प्रॉफिट में हूँ अपनी पोजीशन से, और मैं अपना पार्शल यहाँ पे ले चुका हूँ 881 पे। तो जहाँ पे अभी प्राइस है वहाँ पे मैं ऑलरेडी एक बुक कर चुका हूँ। और ये क्योंकि वैल्यूएशन है, फंडेड अकाउंट नहीं है, यही अगर फंडेड होता तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे भी ले ले रहा होता, मैं इतना हाईली पोजीशन नहीं होता, पहली बात है। और मैं कब का बंद करके सेशन चिल कर रहा होता। लेकिन आई एम रियली लविंग टुडेज सेशन। Anyone, if anyone would go through this session, I know it is really long, we are already more than 4.5 hour in. लेकिन if anyone is going to go through, we called out each and everything at the start of the London session. आई थिंक मैं 1 बजे से लाइव हूँ शायद। एंड देन
फिर उसके बाद वाला सेशन तो आप लोग देख ही रहे हो कि सो फार सो गुड। रियली गुड सेशन ब्रो। सबसे इम्पोर्टेंट बात अदिल भाई ये है कि आप ना अपने रूल्स नहीं वो ब्रेक करो। हाँ ठीक है, मतलब कुछ लोग कहेंगे कि मैं यहाँ पे ओवर लेवरेज था या वो सब था, लेकिन जो मैं टारगेट कर रहा हूँ ना दिन के लिए, मुझे मतलब गम नहीं है कि अगर ये मेरी जो वैल्यूएशन है ये ब्लो हो जाती है। और मुझे जो मैं टारगेट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि ये आज पास हो जाए ताकि कल का जो न्यूज़ इवेंट है पीपीआई 8:30 बजे का, उसको मैं फंडेड अकाउंट पे खेल सकूँ। तो रिस्क इज मैनेज, बाकी चीज़ें भी मैनेज हैं, तो कोई गम नहीं होना चाहिए आपको। अब यू सी ई एस इज एन क्यू इज़ नॉट रेप्लिकेटिंग ई एस अप टिल नाउ। ई एस ने यहाँ पे ट्रेड कर लिया है इस इनएफिशिएंसी में 5 मिनट की, जो कि अगर एन क्यू के टाइम में देखो तो वो यहाँ पे बैठ रही है। तो एन क्यू इज शोइंग अस एक्सट्रीम बेरिशनेस। और ईएस को अगर तुम देखो भी तो ईएस ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, ऑल दो एनक्यू जो है वो लैग कर रहा है। तो ये है, अभी तक ई एनक्यू ने जो है वो यही वाली इन्वर्ट नहीं की है, ईएस जो है वो इस वाली में पहुंच गया है। समझ रहे हो? तो आफ्टर दिस यू आर गोइंग टू स्लीप यार? आई आई होप सो, इफ इट गिव्स मी द टारगेट कि मुझे 8:30 बजे के बाद ट्रेड नहीं करना हो, क्योंकि ऑफिस भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो लेट्स सी। बट यू सी अब ईएस जो है वो यहाँ पे आ गया है और इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी उसने टैप कर दिया है, जिससे मैं तुम्हें समझा रहा था कि वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट इज गोइंग टू डू। और अभी सबसे बेस्ट चीज़ मेरे लिए जो करने की होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आई शुड ट्रेल माई स्टॉप इधर टू दिस, और क्योंकि लेकिन फिर भी मेरा अगर वो मुझे स्टॉप आउट करती है तो फिर मुझे घुसना पड़ेगा ना। तो मैं वो नहीं करना चाह रहा कि मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो इसके हाई पे ट्रेल कर लूँ या इसके हाई पे ट्रेल कर दूँ, सीइंग के व्हाट ईएस हैज़ डन। तो मुझे पता है कि जब वो मुझे इधर स्टॉप लॉस करेगा एंड इफ आई सी एनी बेरिशनेस आई विल हैव टू एंटर अगेन। तो इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू स्टिक विद माय मैनेजमेंट अभी तक, क्योंकि अगर तुम देखो अगर मुझे यहाँ पे घुसना पड़े तो मेरी जो एंट्री प्राइस होगी वो अभी से नीचे होगी। समझ रहे हो ना? तो आई विल बी इन फर्दर डिस्काउंट, तो मेरी जो प्राइस है वो ख़राब हो जाएगी। जो अभी प्लेसमेंट है मेरे ट्रेड की वो मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है, rather than re-entering here and being stopped out at here. So ES is in this inefficiency now, which it has used previously to run lower. तो अगर इसको ऊपर जाना है तो ये यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेगा इस 5 मिनट वाली इनएफिशिएंसी में, और ये यहाँ से बिल्कुल आसमान की तरह उड़ जाएगा। लेकिन अगर इसको नीचे जाना है तो उधर भी ये ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये रिक्लेम्ड इनएफिशिएंसी है। वो भी मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैं री एंटर करता हूँ, समझो कि मैं मुझे यहाँ पे एंट्री मिलती है, यहाँ पे एंट्री मिलती है, तो मेरा जो स्टॉप होना चाहिए उसूलन वो फिर इससे भी ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब वो इस इनएफिशिएंसी में आ गया है तो फिर वो ये भी ट्रेड कर सकता है। समझ रहे हो? तो अभी के लिहाज से जो मार्केट ने अभी तक का जो ये प्राइस एक्शन प्रेजेंट किया है, आई डोंट थिंक कि मैं
इससे बेहतर प्लेस हो सकता हूँ टू अचीव माई टारगेट, इन शॉर्ट। एंड ये जो है ना, दिस इज द की थिंग, यू नो, हाउ टू प्लेस योर सेल्फ इन अ वे, क्योंकि सबको पता हो, मतलब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी एक टाइम पे कि व्हाट इज द ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, मार्केट किस तरफ जा रही है, बट प्लेसिंग योर सेल्फ विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टू अचीव योर डेली टारगेट्स, दैट इज द मेन गोल। और अगर आपके डेली टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं तो हाउ टू मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली, वो एक और चैलेंज है। So it wicked higher, closed bearishly again, and now trying to trade higher again. Let's look at ES on 1 minute. Right back in this busy it just created. अगर ये यहाँ से बुलिश होती है ना तो मेरा ख्याल से फिर ये इस इनएफिशिएंसी में भी जा सकती है, but we are 1.5 hour away almost, and we are inside macro right now. 650 to 710 macro, which is actually a really good macro. यहाँ पे आप really strong movement देखते हो प्राइस की during this time. Okay, going against us. Let's see if it is going to respect this inefficiency bearishly. Does that really keep favoring them? I'm going to keep that open. $15 also got some little inefficiency, which has been referred to previously. Okay, here there is small 15-minute inefficiency. I'm going to mark that instead. So if it starts running from here, we will see this dip inside that earlier in the day as the trade, as the inefficiency pill of this busy, which I thought that it is not enough, to be honest, and it should do more sell side damage before the news release. And if they want to continue it higher, they can continue it higher after the news has released. But if we get stopped out and it is not going to respect this inefficiency on NQ, then I think we were offside for this session, which is not a big deal. We still managed to make some profit. And if I get stopped out, I'm going to close my day here.
ES needs to start taking a slap now. If they want to price it lower from here. And the reason for me to expect the run lower, like one of the other reason was like pre-news release, was the fact that CPI news release is usually the one-side move, and all the destruction is done usually prior to that. So I was expecting it to trade lower and damage all the sell side before 8:30, so that it is ready for the one side move towards the higher end. We can still be in play if it respects all these 5 minute inefficiency, but ES is looking really bullish. All right, that is some good reaction. 7 o'clock open, new hourly candle. Let's look at the hourly chart. Okay. Hmm. Right in that inefficiency. So nothing to worry about, to be honest. If they manage to not trade this candle any higher, we can be in play. But for that to play out, ES really needs to take a hit, which is a little like it seems to be unlikely the way it is pricing right now. And this is what you build up. Like sometimes there is no other reason than your intuition, the way it prices the market and candles. You just realize that, that the reversal is in and we are changing the order flow just by building the experience, and that is built by watching one market again and again every day at the same time. So really last chance for us, this 1 minute inefficiency. If that is not respected, then we'll be stopped out. That 1 hour candle is also flipped bullish from this inefficiency that we were expecting it to use as bearish inversion.
Really like the last candle's close and this candle's up till now trading on ES, respecting the 15-minute CB to the tick. This 1 minute to be used bearishly. For it to play out in our favor. I haven't been looking at the annotation charts. So, okay, we are trading around the midnight open range. Okay, this is not even set properly. Okay, look at the high of the midnight open range here. We've got midnight open price. Let's see, let's see. No, NQ seems to be catching up bullishly, to be honest. Inverting that 1 minute CB. Still going to stick with my stop loss and everything. If it wants to kick me out, it will have to trade to that level. Simple as that. Even on that 91515. स्टॉप लॉस हिट करके नीचे जाएगी. नो वरीज अदिल भाई, पार्ट ऑफ द बिजनेस. क्या अगर उधर से वो नीचे जाएगी भी, आई विल नॉट इंटरैक्ट. Still 3 minutes left in this macro. So 630 was used to drop lower, took that sell side, and the 650 to 710 macro was used to trade inside that inefficiency. I expected it to do such kind of price action until 650 and then use the 650 and 710 macro to drop prices lower.
but didn't get that. All right, pushing higher on NQ, and looks like NQ is catching up on ES now. It wants to push prices higher from here. If it does so, I think then it will head to take London buy side at least on NQ. And even that will be used to invert bullishly. If we want to see any reaction bearishly or continuation of downside run, I think it will be from here. And the last chance would be this daily CB quadrant level. If ES had continued showing me bearishness somewhere around this, I would have added one more. Because around 905 price level, I'm only going to increase $200 more on my stop loss. So I'm happy to do that. But the thing is, like, should be able to hit my target if it gets to this level, I think. Right? I can add a micro. Oh, okay. No need to line it up.
Oh, sorry. Too bullish at the moment. Equal lows, equal lows, equal lows. Jagged. Add inefficiency. Jagged, jagged. Can take that high. If it does so, what is stopping it to take that high? Let's see. New 15 candle. Right, last transfer. Nah. The close of the last candle indicates enough. Not today, not today, not today. No worries. It is what it is. अदिल भाई आपको याद है मैंने कुछ बोला था वॉल्यूम इम्बैलेंस के बारे में We are 5 hours in this stream, guys. If you guys have learned anything or found this valuable, please give it a like. Gives me some encouragement. Not reversing, basically, लेकिन the fact that sometimes you will see कि price उससे ऊपर जाएगी, लेकिन the bodies will respect the thing itself. समझ रहे हो? And when I was in this trade and trailing my stop to this level, मैंने एक और चीज बोली थी. मैंने क्या बोला था कि this daily SIBI quadrant level is going to be our last chance for this short position to work out. We are still not confirmed on that. If it trades below this, like I would like to see it slapped seriously, which I haven't seen, to be honest. तो ये सीन है.
But the fact that it did close above the volume imbalance and did not even refer the daily SIBI again, I really like that if it continues on closing bearishly from there. But the early candle looks really bullish. We have still got 40 more minutes here. So all this first 20 minutes can be a manipulation if we are on site. If not, then it is what it is. We will book our day around, I think, 1300 profit if I'm not wrong. Like in the way ES has been holding this range and allowed NQ to trade higher, I think both of the indexes are pretty bullish. And this is going to be our last chance, to be honest. And that is one more reason I'm not adding one more contract here. Because if you see, like ES has been trading around this range, while NQ has done all this range in the meanwhile. So looks like NQ wants to catch ES up towards the higher end. If it has respected, लेकिन उसके बाद का जो वो है रन, वो इतना स्ट्रांग नहीं है ना. देखो, अगर वो रिट्रेस भी हुआ, सिर्फ यहीं तक रिट्रेस हुआ. ईएस का भी जो मैं समझा रहा हूँ कि ईएस सिर्फ यही रेंज होल्ड कर रहा है और एनक्यू ने इतनी बड़ी रेंज वो की है, ट्रेड की है बुलिशली. तो लुक्स लाइक के एनक्यू वांट्स टू कैच. क्योंकि आप देखो तो ईएस जो है वो सिंस हेयर 5 बजे से अभी ये 7:30 बज रहे हैं, वो हायर ट्रेड कर रहा है आफ्टर टेकिंग दिस. तो वो उसने लंदन सेल साइड के बाद ही अपना ऑर्डर फ्लो जो है वो बुलिश कर लिया है. लेकिन एनक्यू का ऐसा सीन नहीं है. एनक्यू ने अभी ये 6:30 बजे एक और सेल साइड पे रन किया था. तो अब मुझे लग रहा है कि एनक्यू, क्योंकि हायर एंड पे वो नीचे की तरफ था, तो एनक्यू ने ऊपर ट्रेड किया, जबकि ईएस ने सिर्फ यही होल्ड किया. समझे. लेकिन अब टू बी ऑनेस्ट इसको यहाँ से चले जाना चाहिए ऊपर, अगर इफ इट इज़ बुलिश, इफ इट इज़ बुलिश. और ईएस को भी, द वे इट इज़ ट्रेडिंग राइट नाउ, आई एम रियली इनडिसाइसिव. और इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा कुछ भी. ऑलराइट, पिछला क्लोज तो अच्छा है टू बी ऑनेस्ट. लेट्स सी ये जो छोटी सी बिसी है, इसको ये कैसे ट्रेड करता है. अंदर तो आ गया. और यहाँ पे जो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है ये इसमें, आई वांट दिस टू बी यूज्ड बेरिशली. वरना अगर ये बुलिशली है देन वी विल बी स्टॉप्ड आउट फ्रॉम हियर. I'd like to add one more and increase because it is
So it's going to increase my loss by $140, which I can afford right now. Hmm? Push hard. Okay. Gold is going short. स्टॉप लॉस हिट हो गया? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ. हाँ, हो जाएगा लगता है. दोनों तरफ उल्टे थे भाई हम. Like after 6:30. उसने भी कोशिश की to trade higher because I think I was up $1,500, $2,000, but didn't work it. Do not like the close there on NQ, closing above the volume imbalance. Looks like going to be stopped out, which is fine. Everything was managed. Didn't break any rule, that's the main thing, and didn't go reckless or try to get into and out of positions a lot. Only took 2 trades and stuck to them. Also booked some profit. So pretty happy with the session and very good learning as well throughout the session. We read price really well, I would say. It's just this thing from here. I could have identified that run, and I started mentioning that we might be in trouble since then, but it's just that I did not want to manage my position accordingly for that, because we at this level we only needed $500 and we were in with 2.5 contracts. So even it would have moved only 5 points if I'm not wrong. Yeah, 7 points, and we would have got our $4,000 profit. Now closes above the daily civic quadrant as well now. Alright, okay guys, closing my day with $1,100 profit. I'm going to close my session here. Thank you for being here. Really good session. Really like today's session, and I don't think that I will be trading the CPI, but if I am, I'm going to live stream again in an hour.
So until then, take care, stay safe, and thank you for being here. Cheers.